everybody. Hi, everybody. Antora, you're mute. Hello, everyone. So guys, I know आप सोच रहे होगे कि why are we talking Darlings again? We've already done a review, but हमें Darlings इतनी पसंद थी कि हमने सोचा कि we need to come and talk more in depth on Darlings because we definitely think it's a good watch. What say, Odie? I think it's a very important film as well. So definitely a detailed discussion is required ताकि people should educate themselves कि why this movie needs a detailed watch again. Yeah, because जब हमने review किया था, there were so many things we wanted to talk about. We could sit there and talk and talk and talk on it. Like in review, it would have been like an hour or more. So we're like, Yeah. okay, forget it. Let's just cut the review off where it is, and then we will come and talk about it. Antora, so you're new here, guys. This is Antora. She's a friend of ours. She also watched Darlings. Antora, what did you think? How did you like it? Oh my God, I loved the movie. I could not believe this was the director's first movie. I mean, that it was shockingly so good. And I couldn't take my eyes off the screen even for a minute because there was something happening all the time. So Yes. the humor was excellent. The mother-daughter relationship was excellent. How they talk to each other without even, just like blinking and stuff like that. And then they do the whole thing when they, their whole dynamics was excellent. I loved it. I loved it. You know, you talked about Naveen Harris is coming. He's on his way. He's a little late today. You talked about the director, Jasmeet Reen. I just want to say, ek to, I love when women directors tell women's stories. Because Love it. domestic violence can happen to guys as well as girls, obviously. Like this story is about domestic violence onto a girl, a woman, right? So I love the way Jasmeet handled this subject. There was sensitivity in it. She showed both sides a little bit. Ki kaise hain your characters? They weren't flat. You know, the characters had their complexities, and I love कि उसने emotional up and down दिखाया है. She didn't set out to make Alia look like a hero, you know, or larger than life. She showed the struggle women have in domestic violence, but not just that, the struggle leaving that situation. Because a lot of people, we all think कि domestic violence है, अगर लड़का इतना खराब है तो वो छोड़ के क्यों नहीं गई, वो घर पे क्यों बैठी अभी तक. So this movie shows कि क्या problems हो सकती है, in all of this. So I really love that. Odie, I see you shaking your head. या कीर्ति, मुझे लगता है कि ये जो जसमीत के रीन है उसकी डायरेक्टोरियल से हमें ये चीज समझ आती है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अ वुमन टू कम ऑन द बोर्ड एंड नरेट द स्टोरी विच शी फील्स राइट. इट्स नॉट अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस ओनली. जब मैंने इसको, आई थिंक आई वॉच्ड इट लाइक 5 टाइम्स, तो मुझे लगता है खाली सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन ऑफ सेक्सिज्म बहुत ज्यादा दिखाया गया है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ पेट्रियार्की बहुत दिखाई गई है. एक अंडरटोन पेट्रियार्की थ्रू आउट चलती है उसके अंदर, चाहे वो आपके सोसाइटी का it's also सोसाइटी का क्या, तू फ्रीज हो गया. It's also the toxicity, right? The toxicness that happens between in a marriage, in a relationship. So he was saying, first of all, he was blaming his alcoholism as a problem. Yeah, he was beating her up, and the next thing he would be so sweet, apologetic. This is something you see in real life. Classic. It's classic Antora. क्योंकि excuse making बहुत ज्यादा होती है कि जॉब नहीं अच्छी, जॉब की टेंशन है, पैसा नहीं है, पैसे की टेंशन है, दारू पी रहा है, it's because of दारू. And I'm like, there's so many people in the world जिनके पास पैसा नहीं है, या जॉब इतनी अच्छी नहीं है, या दारू पीते हैं. They don't start beating their wives, So ये apology making होती है, excuse making होती है. And I loved कि उसने ये दिखाया कि एक तो these excuses are there, and then even when people know कि domestic issue हो रहा है, violence हो रही है, how they ignore it, सुन के भी अनसुना, देख के भी अनदेखा. It's just as a viewer watching it, I couldn't help but put myself in this situation. अगर मैं ऐसी marriage में होती, मैं क्या करती, like मैं बदलू जैसे होती कि नहीं. So my favorite was when he says to her that I'm beating you up because I love you, and you're taking it because you love me. You love me, I actually believe that. Yes. कि I love you तभी तो मैं हाथ उठाता हूँ. तू प्यार ना करती तो तू यहाँ सहती ना. What the hell?
और कीर्ति यही चीज है ना जो लाइक आई वाज सेइंग कि नॉर्मलाइजेशन दिखाई है, इट्स अ क्लासिक केस ऑफ नार्सिसिज्म, जहाँ पे कांस्टेंट गैस लाइटिंग दिखाई जाती है, Yep. जहां पे आपको ये दिखाया जाता है कि हाँ मेरा बैड बिहेवियर जो है उसकी रीजन तू है, या फिर एक मेरी बैड एडिक्शन हो सकती है, मैं बुरा नहीं हूँ। मतलब माई बैड एडिक्शन कैन बी माई स्मोकिंग, माई एल्कोहलिज्म, और मे बी यू, सो इट्स नॉट मी इट्स यू। तो वो चीज इतने क्लासिक तरीके से दिखाई गई है और इतने अच्छे तरीके से समझाई गई है, तो उसके लिए कूडोस टू जसमीत। एंड Yep. दैट टू, अच्छी बात यह कि राइटर जो है ना इसके अंदर, इट्स अ बैलेंस। Yes. परवेज शेख एंड जसमीत केरीन दोनों की राइटिंग की जो प्रोग्रेस है वो हमें नजर आती है, कि जहां हम बात करते हैं ना कि फेमिनिज्म की जब बात है, तो फेमिनिज्म के लिए इट कांट बी ऑन वन साइड। Yeah. इक्वालिटी के लिए आपको अ मेल एंड फीमेल जेंडर दोनों का इकट्ठे होना, और पैट्रियार्की के अंदर भी दोनों का ही कसूर होता है, किसी एक का नहीं होता। Yeah. और इस मूवी में उसको इतने प्यारे तरीके से दिखाया गया है कि इट्स ब्रिलियंट। या 100% मुझे लगता है कि स्टोरी टेलिंग बहुत ही ब्रिलियंट है बिकॉज हर एक सीन इट इज सपोज टू बी देयर, इट मेक्स सेंस। ऐसा नहीं कि ये सीन फालतू में डाला था इन्होंने, नो, ईच नो, सीन बिल्ड्स अप एंड यू नो वाचिंग द मूवी द टेंशन वाज देयर कि ओ माय गॉड अब क्या होगा, ओ नो 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 क्या होगा क्या होगा क्या होगा। सो आई फील दैट वाज रियली ग्रेट। एंड जहां तक हम कर रहे थे ना कि द वाइज नवीन कहते हैं is just male ego who doesn't want to accept his mistakes specifically in front of his wife because wo chota ho jayega. 100%. I feel like male ego plays a role in this. Society does that. Society mein या na, like especially in a marriage, in a home, पति का दर्जा ऊपर या बाप का दर्जा ऊपर, माँ नीचे एंड वाइफ नीचे, है ना? तो आई फील लाइक अगर होम में या इक्वालिटी नहीं होगी ना, then this ego is always going to play a role, you know? And it's also like all she wanted was to be loved. Her Alia's thing was Alia's character, but Badru, right? So she wanted to be in love, and everything was okay in love, you know. Mm-hmm. Till she lost her baby, that's something she loved even more than him. So that's when Yeah. wo jag gaya. But like Yeah. for her it was very simple: love and love and love. That's it. That's all I want. She enjoyed the gifts. She enjoyed the attention the next morning. Yep. She liked all of that. Yeah, so let's just go ahead and talk about the characters, okay? तो चलो पहले तो बद्रू की बात कर लेते हैं, है ना? Alia Bhatt plays Badru, and Badru is basically this girl, like Antora, you said, she has dreams, she wants a child, उसको अपने life में भी, you know, आगे बढ़ना है, like whether where she stays, the life they lead, तो सपने देखती है, वो excuses भी बनाती है अपने husband के लिए, वो उसको माफ भी करती है, she goes through the same cycle night after night with him, रात को दारू और मार, सुबह ऑमलेट और प्यार, you know, यही होता है, and it's just like a constant thing, it's cyclic, and I feel like ये जो आलिया है, she portrays the character so beautifully, so real, उसका हर एक इमोशन मुझे रियल लग रहा था, जब उसको मार पड़ रही थी, I felt for her, that miscarriage वाला सीन जो उसका हुआ था, that her crying was so उफ। real, it felt so painful and raw, and मुझे लगता है कि अगर आपकी लाइफ में domestic violence हुआ है ना, this movie is very triggering for you, especially these kind of scenes, क्योंकि I'm sure this has happened to a lot of women, and मुझे लगता है कि बद्रू का portrayal उसने बहुत अच्छा किया, मुझे बद्रू की growth भी बहुत अच्छी लगी, she went from this simple girl who thought that, you know, like if I attract my husband, he will not do this, if I have a child with him, he will stop, if I stop his alcohol, he will stop, you know. So she has these things कि ये करूंगी, मैं छोड़ के नहीं जा सकती इसको, and then by the time the end comes, she turns into this warrior, you know, she believes in herself and she believes that she deserves better. तो मुझे इस character की growth बहुत अच्छी लगी. And I also love the fact that she just tied him up and wanted to keep him tied up for as long as she could. That was her, like, you know, outlet. Yes, kabang ko rakhte. Then the mother's like, you know, what are you going to do with him? It's like, idea nahi aaya. I don't know. Idea aayega to bataungi. Exactly. A process to torture him a bit longer. I love that part. अच्छा, बदरुन्निसा का जो कैरेक्टर है, आई थिंक वो इतना ज्यादा ट्रिकी था क्योंकि उसके अंदर हम एक नाइव लड़की देखते हैं, शी इज द वन जो सुपरस्टिशंस में भी बिलीव करती है, चाहे वो नींबू मिर्ची का क्रॉस करना हो इन द बिगनिंग, देन के पैसे जो है वो राइट हैंड से लो, लेफ्ट हैंड से मत लो, देन शी नोज कि जी अगर बर्ड ने क्या नाम है शिट कर दी तो इट्स अ गुड लक, so everything we have seen कि she is superstitious, she is naive, but
शी इज वेरी मच प्रैक्टिकल एज वेल. उसको नजर आता है कि शायद मैं इस रिलेशनशिप में रहूंगी तो इसको वर्क अपॉन करती हूँ, क्योंकि वो अपने ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव माहौल की वजह से उसकी अपब्रिंगिंग यही दिखाई Yeah. गई है ना, कि एक ब्रोकन मैरिज से वो आती, ब्रोकन फैमिली से वो आती है, जहाँ पे वी सी के जी मदर भी उसकी सिंगल पेरेंट है, तो शी डजंट वांट टू बी लाइक हर मदर. और वहां पे कॉन्स्टेंटली जब उसको पता है मेरा हस्बैंड मुझे बार बार मेरी माँ के ताने ही मारते, अपनी अम्मी जैसी बन जाएगी, अपनी अम्मी जैसी बन जाएगी. सो शी थॉट्स कि जी, Yeah. शी थिंक्स कि मुझे एक पॉइंट प्रूव करना है. आई डोंट Yes. वांट टू बी लाइक हर, आई वांट टू रिमेन इन दिस मैरिज बिकॉज, क्योंकि लव मैरिज भी थी. सो Yeah. वो एक प्रेशर भी दिखाया गया कि जी Yeah. लव मैरिज का प्रेशर तुम पे ही है, हम पे Yeah. नहीं है. लड़का मैंने चूज नहीं किया, तुमने चूज किया. Yeah. एंड शी नीड्स टू प्रूव दिस टू हर मदर कि मैं अपनी जिंदगी अकेले नहीं गुजारूंगी, मैं इस शादी को चला के दिखाऊंगी. बट जो क्रक्स है मूवी का, डार्लिंग्स का, बेसिकली मुझे लगता है रूमी ब्यूटीफुली वन सेट कि वुंड इज द प्लेस वेयर लाइट The light एंटर्स योर shows बॉडी. through. Yep. या Yep. सो बेसिकली आलिया भट्ट का करेक्टर ही वही है कि उसको इतने ब्रूस्ड है वो, तो जब उसको एहसास होता है कि सफरिंग एंड एनलाइटनमेंट दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड, तो Yep. उसको इस चीज का पता चलता है कि मैं अपनी सफरिंग से, अपने पेन से, शी गेट्स दिस ड्राइव कि अब मुझे लाइफ में अपनी क्या प्रायोरिटीज रखनी, मे बी शी नीड्स अ चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव विच शी Yeah. डिड. और वो Yeah. उसको कैसे डील करती है, इट्स ब्यूटिफुल. एंड आलिया एज एन आर्टिस्ट, वी हैव सीन हर ग्रोथ लाइक एनीथिंग. उस लड़की ने, she has evoked the life in that character. Had it not been Alia, वो इसके अलावा ये कैरेक्टर कोई कर ही नहीं सकता था. Yeah, मुझे Brilliant. भी यही लगता है. Making a I point, think कि ये another जो तू quote. first of Wow. all, empathy friends, hi. She says hello, hello, gorgeous Punjabi darlings, Kirti, the one and only Chingistan queen, and the hottie smarty Antora. Hey, empathy friends. Okay, तो मुझे लगता है कि ये जो तू कह रहा था ना कि prove, because she had a love marriage, और वो नहीं चाहती कि उसकी marriage भी ऐसे टूटे जैसे उसके mom की हुई थी. But I feel like यहाँ ना, the mom is not telling her कि because of your love marriage, because of this, the Yeah. mom wants कि वो छोड़ के आ जाए. The mom is supporting her daughter कि future में वो तुझे मार डालेगा, फिर हम क्या करेंगे. The mom is being that strength. But this movie beautifully shows कि मार खा लो, your life can be in danger, that's fine, लेकिन छोड़ नहीं सकते क्योंकि that's stigma. So it just tells you like which side is more threatening, getting a divorce and being a divorcee, or being a battered wife. So I feel like इस movie में ये बहुत अच्छा दिखाया इन्होंने. जहां तक अब हमने शफाली की भी बात की है, तो शमशुनिसा, okay, I feel like she was a very strong character. Shafali Shah की ना acting में उसकी आंखें बोलती हैं. This lady doesn't need to say a single word. Her eyes show the anger, the disbelief, the sadness, the क्या कहते हैं, quirkiness जो था इस character में. उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं and सब बयान कर देती हैं. I think ये शिफाली का character इतना अच्छा था क्योंकि शिफाली इतनी अच्छी थी. She was so believable. मुझे आलिया एंड शिफाली की जो केमिस्ट्री है ना माँ बेटी की, it felt like ये असल में रिश्तेदार हैं, ये असल में माँ बेटी हैं, क्योंकि they fed off of one another. Their chemistry was amazing. And Shefali na strong lady hai, and she's been so underutilized in the Hindi film industry. I feel like thank God इसको मौके मिल रहे हैं, because Shefali, जब हम टॉप एक्ट्रेसेस की बात करते हैं ना इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, शिफाली शाह का नाम आता नहीं है इतना. I don't know why, because she is incredible, and this Shamsu character came to life because of her. लग रहा था कि Yeah. अपनी struggles देख रही है, लग रहा था कि she's this mom who's trying to support her daughter, but she's helpless क्योंकि daughter कुछ नहीं कर रही. Antora, what do you want to say? It's just adding to Odie's point, the way Alia's character, Badru's character grew, Shamsu's character grew with her. They were supporting Yeah. each other, right? So her character also grew, and it took me totally by surprise because I saw the paper. They were Yeah. hinting, that the father is missing. Yeah. It took me by surprise. Some people might say they were predicting it. I had no idea that was coming. Yeah, I didn't either. Yeah, it took me by surprise, and I loved not just she, at the end, your perspective about her changes a little bit. You're like, okay, she's a supportive mother. She's a supportive mother. Then you think, was she an instigating mother too? Because she has done this too.
So, you go back and you think, and that's what a good movie is all about, the character growth. Yeah. These have, the storytelling had characters growing and showing the progression of their growth like throughout. Yeah. That's what I love most about the writing. And the other thing is they did not portray Hamza as a womanizer. Yeah. That's something I Yeah, really like, Yeah. because that's one of the traits you put into the abusive guy, right? Yeah. He has to be a womanizer too. Yeah. So his fault was, he's a violent guy. He beats his wife, which is Yeah. bad enough, but not that wasn't shown. So this was also refreshing for me. Yeah. yeah. So Shamsu Nisa is my favorite character throughout the movie. Yep. I feel like I am Shamsu Nisa because I resonated with this character so Yeah. much because she is not traditional. मतलब आप एक मदर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं इन डिफिकल्ट रिलेशनशिप जब वो अपनी बेटी का घर बर्बाद होते देखती है कि बेटा तू कर ले, बच्चा कर ले, तू इस बंदे को संभाल ले, चल तू कपड़े अच्छे पहन ले, इसको खाना अच्छा बना के दे, अच्छा तैयार होके दिखा. बट हियर दिस इज द वुमन हु सेज इसको चूहे मारने की दवाई दे, ये ठीक हो जाएगा. So Yes. we see कि she is like get rid of this man Yes. because he's not going to change. तो हमें Exactly. नजर आता है कि एक experienced औरत है who also is very empathetic क्योंकि पड़ोस में एक औरत की मौत हो जाती है तो वो बर्तन उसके खरीद रही है बट she considers as possibilities as well कि okay 100 रुपए का लूंगी. So I love this Yes. practicality about her, Yes. और दूसरी चीज ये है कि उस कैरेक्टर में जब हम ये देख रहे होते हैं कि वो अपनी बेटी के लिए बर्दाश्त भी बहुत करती है. नो पेरेंट, ठीक है, कैन टेक हर और हिज चाइल्ड टू बी बीटन बाय द पार्टनर. यहाँ पे वो बीटिंग खुद भी ले लेती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे वो कहती जी मैं लाइन ड्रॉ करने लगी हूँ, इसके बाद नहीं. एंड लाइक अंटोरा सेड कि हमने सिर्फ ग्रोथ बदरुन निसा की नहीं देखी है, शम्सुन निसा की भी देखी है कि जिस तरह से वो कैरेक्टर ग्राफ जाता है वो कहां से शुरू हुआ था, फुर करके किस लेवल पे जाता है. Yeah. और शी इज अ ग्रेट स्पोर्ट and she's a bad advisor as well. She's a worst And advisor. OD, your internet is worse than her advising skills. Your heart. She's also very, very optimistic. She's constantly looking for little and new ideas on how to reinvent herself. Yeah. She wants to be a cook. She wants to do catering. She wants to look good. She wants to explore her love options. So she's like full of life and full of like feistiness. So that's 100%. Yeah. And one of her best scenes was this scene jo Odi baat kar raha tha in the car when Hamza, who literally just leaves the jail because he gets off, he turns around and he hits his mother-in-law in the nose. Yeah. I felt that scene was, first, it shows ki Hamza is literally like insane in the means that abhi to jail se chuta hai. Abhi, you literally didn't get into jail, and now you turn around and you're hitting your mother-in-law because she said कि जो आदमी औरत पे हाथ उठाता है वो नामर्द है, right? Yeah. So basically, अपनी mother-in-law के सामने भी ये नामर्दी बनाना हाथ उठा के, and उसकी आंखों में जो disbelief था, है ना, कि इसने मेरे पे हाथ उठाया है, and then she didn't even say anything क्योंकि उसको पता था कि मैं कुछ बोलती हूँ ना तो इसने मेरी बेटी को मार देना है, so because of her daughter she swallows her pride, and I love that scene between Alia and Shefali जहां वो कहती आलिया को कि you need to choose या मैं या वो, क्योंकि ये like this is crossing the line now, and एक तो opportunity हाथ से गई, उसको jail होना चाहिए था, it didn't happen because Badru took him out. Now he's beating her up in front of Badru. When are you gonna stand up for us, Badru? कितनी बार हम ये सहेंगे? She goes, I need to go to him because उसने क्या कहा? माँ, मेरा घर मत तोड़ो. Like seriously, जो माँ तुझे एडवाइस दे रही है कि ये लड़का तुझे मार देगा, तू छोड़ के आ जा, the mother who is ready to support you, क्योंकि आलिया ने ये भी कहा था ना कि पूरी मेरी चाइल्डहुड इसने संभाला है काम कर करके, she is the one who brought me up. तो अब माँ कैसे डिस्ट्रॉय कर रही है तेरा रिलेशनशिप तो हमजा खुद डिस्ट्रॉय कर रहा है. सो आई रियली लव दैट. एंड एक सीन जो शेफाली का अमेजिंग था, इट वाज दिस होल क्या कहते हैं उसको, द प्रिजन सीन जो उसके और इंस्पेक्टर के बीच में होता है. आई लव इट. तो वो कहती कि आदमी दारू पी के जल्लाद क्यों बन जाता है, एंड द इंस्पेक्टर सेज क्योंकि औरत बनने देती है. सो फर्स्ट जब ये डायलॉग बोला, I was like, oh shit, they are victim blaming here. What is happening here? And then I realized he's saying
The only reason a man can do this is because a woman is not standing up for herself and not fighting. He goes, And she's an enabler. Yeah. this आदमी like Hamza, he's a monster. He will keep taking advantage. And मुझे अच्छा लगा कि ये जो इंस्पेक्टर था ना, they didn't show him like नहीं हजारों कंप्लेंट्स आती हैं, कुछ नहीं है, घर पे बैठो, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं. This cop was saying, I am here, ये सेक्शन लग सकता है, चलो कंप्लेंट फाइल करो. And the disappointment he had when she took the complaint back was on his face. I love that whole like situation. You are so right, Kirti, because the way the cop said, because the woman lets you, the cop, they changed the whole traditional way cops react to this, right, in movies. So I love that scene as well, because they changed the whole meaning of it. Like and share, everyone, please. Our darling review is also up. अगर आपने सीधा review देखना है वो भी है, तो अभी आप हमारा reaction देखो, discussion देखो. But please like and subscribe, everyone. Yeah, Antora. So I really, really like that scene, even with that. And now coming to Hamza, Hamza is something else. He's so common. He's such a common man. Yes. Yet it was so refreshing to watch a toxic man like him on screen. I really enjoyed his performance. Yes. This guy is amazing. 100%. And he was not, his pitch was not too high. It was not too low. It was just perfect. Yes. Yeah. अच्छा, मैं ना वो शेफाली से ही like कीर्ति वो डिस्कसिंग वो जो सीन था, बिकॉज टू मी वहां से मूवी पूरी चेंज होती है. वो मूवी का सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट था. लेकिन टू बिगिन दैट, शेफाली शाह के कैरेक्टर में एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, नॉट ओनली शी इज अ फाइटर, क्योंकि एंड शी इज लाइक आई सेड कि शी इज वेरी प्रैक्टिकल एंड प्रोग्रेसिव. वो फेसबुक की वीडियो भी बनाती नजर आती है जी, मैं अपना शमसू का खाना बेचूंगी एंड ऑल दैट. वो अपनी सारी पॉसिबिलिटीज देखती है. और हमें ये भी पता है कि वो एक ब्रोकन मैरिज का विक्टिम रही थी, लेकिन she didn't give up on love. That is the beauty of it. And in the entire thing, वो जो एक पोर्शन आएगा आगे जो हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, she hasn't given up on love. चाहे वो अपनी बेटी को जितनी मर्जी उस तरह की एडवाइस देती रहे, लेकिन वो अपनी बेटी की प्रोटेक्टिव ने अपनी बेटी की टुवर्ड्स she was protective only. लेकिन जहां तक वो कॉप का सीन था, आई क्लियरली रिमेम्बर कि एक तो आपको ये दिखाया जाता है कि एवरी कॉप इज नॉट बैड, कि जी तुम्हारे घर का मसला घर ही जाओ. He is so ready to file that complaint and he is so ready to get that FIR done कि वो हमको मोटिवेट कर रहा है. एंड उनके मोटिवेशन के चलते वो रेडी हो जाती हैं. एंड लाइक कीर्ति सर की जब वो उसको बोलती है कि आदमी दारू पी के जल्लाद क्यों बनता है, एंड ही इज लाइक बिकॉज औरत बनने देती है. और उसी तरह शी इज कंप्लेनिंग, शी इज नैगिंग के जी, तो उसको बोलता है कि खाला दुनिया चेंज हो गई है. कहती है सिर्फ ट्विटर पे चेंज हुई है. Yes, हमारे लिए चेंज है. एंड दैट इज सो ब्यूटीफुल कि आप ट्विटर पे जाके बड़ी बड़ी बातें कर लें, इन रियलिटी व्हेन इट कम्स टू द रियल लाइफ, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म. के आप डार्क कॉमेडी समझते हैं, इट इज अ रियलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड जब वो पूरा सीन चलता है, हमजा गेट रिलीज, उसको वो फाइल वापस कंप्लेंट वापस ले लेती है. एंड लाइक इन माय रिव्यू आई सेड कि जब वो बाहर निकलता है, देयर इज दिस वॉल बिलबोर्ड इन द पुलिस स्टेशन सेइंग हैप्पी वुमेन्स डे, प्लीज इंश्योर दैट एवरी डे फॉर अ वुमन इज सेफ एंड हैप्पी. एंड आई लाइक द आयरनी हियर जहां पे कि we talk about safety of women on roads, but about the safety of women in the home, जहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे लिए सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर और क्या नाम है हैप्पी प्लेस होनी चाहिए. वहां पे इफ यू आर नॉट सेफ, चाहे वो मेंटली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे फिजिकली हो, वो जिस तरह से पिक्चर में दिखाया गया, इट्स ब्रिलियंट. लाइक शी वेंट ऑन हमजा. तो आई लव ये जो हमजा का कैरेक्टर था ना, ओवरप्ले उसने किया नहीं. वो उसने जो किया है ना, इट्स लाइक टेक्स्ट बुक अब्यूजर. ओके, पहले कांड करना है ना, ट्रिगर होना है, 1 सेकंड में कांड करना है, उसके बाद सुबह उठ के ओ बेबी ओ डार्लिंग यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑमलेट मेकर, मैंने ये फोटो तेरी डालनी है, ओ डार्लिंग. यस, आई फील लाइक, एंड औरत को भी दिखाया है कि ये मार खा रही है, पर सुबह उसका हस्बैंड उससे प्यार से 2 बातें कर रहा है, एंड शी इज गोइंग विद इट. So this cycle was amazing. And मुझे लगता है कि जैसे you said कि the irony was insane कि बाहर
पोस्टर लगा हुआ है कि हैप्पी वुमेन्स डे, मेक श्योर वुमेन आर सेफ, लेकिन वुमेन अपने घर में नहीं सेफ, बाहर का छोड़ो, फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंस आउटसाइड, इन द होम शी इज बीइंग अब्यूज्ड बाय द मैन शी लव्स। तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? एंड जहां तक नॉर्मलाइजेशन की बात हम कर रहे थे या ट्विटर के ऊपर बात कर रहे थे कि डिवोर्स इज नॉट अ रियलिटी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, ओनली द ट्विटर वर्ल्ड। मतलब कि अगर हम मूवी में भी देखें, वो मार खाती है, लोग सुनते हैं, राइट? बट द थिंग इज दैट सुन के अनसुना, लाइक वो जो पार्लर वाली आंटी है नूर बार बार वो कमेंटरी देती है, बार बार शी हियर्स द फाइटिंग, द आर्ग्यूइंग, द तोड़ फोड़। व्हाट डज शी डू? Nothing. She goes back to applying mehndi and doing massages क्योंकि उसको पता है ये होना है। तो अगर हम खुद we don't watch out for each other, no one else is gonna do it either, तो हम क्या ही कहेंगे। And Hamza, I think, इस मूवी में उसको दिखाया है वो बिच्छू है, he cannot change his फितरत, है ना? मेरे लिए he was like a viper, okay? He's crouching and you don't know कि कब इस दिमाग में कुछ पढ़ना है, ट्रिगर होना है, and how he's gonna spring and bite. I felt like he was a viper, and ये जो विजय वर्मा है ना, amazing, amazing, amazing actor. जहां मैं कह रही थी कि शिफाली शाह में आंखों में दिखता था what her character was going through, you saw that with Hamza, you saw that on his face, his body language. एक सेकंड वो खुश है, खुश भी नहीं है, शांत है, थोड़ा फ्लर्टिंग भी कर रहा है, रिलैक्स्ड है, and then कि something is gonna happen, इसको ट्रिगर होना है, and एक सेकंड में उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती थी, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते थे, आंखें, I was like, this guy is so evil, so psycho, and I love it. Not the character, but matlab how he's portraying it. Performance. Yeah, performance. He's not acting like some, Marvel villain, over the top, Mogambo even. He's acting like a normal guy, जो आपका neighbor भी हो सकता है, आपका family member भी हो सकता है. That's how real he looked to me. And Odie, wait 1 second. There's a comment here from Tahir. Hey Kirti, would love to see the reaction on the Legend of Mola Jat. I don't know what that is. If you guys it's a Pakistani film. It is said to be the biggest Pakistani film made. Would love to see the reaction. Sure. Odie, point noted. I need a point noted. Point noted. Yes, and Kanchan कहती हैं, wow, yes, agree, Twitter and the keyboard warriors. Oof, 100%, 100%. Yeah. कि लोग ना यहाँ ट्विटर में या कुछ सी भी सोशल मीडिया में with a fake name, fake ID, कुछ भी बोल सकते हैं, woke हो सकते हैं, पर अपनी लाइफ में जब जाते हैं ना, they close the doors. Are they really those people? So I love that line that Shafali said. Yeah. Like my favorite character, the most relatable one I could find, like I could relate to certain things that this character was doing, was Zulfi. I love darling, 1 second. Let's complete Hamza, then we'll go to Zulfi. Yeah. एक second. Naveen, he says, but Alia अपनी mom की नहीं सुन रही, तो वो parlor वाली आंटी की क्या सुनती? We're not saying कि parlor वाली की सुनती. No. We are saying why the parlor वाली is not taking a stand when she hears these arguments. वो क्यों चुप बैठी है? Why is she normalizing? ये हम कह रहे हैं. I guess parlor वाली ने सही किया. She didn't interfere in Alia's life. Otherwise, parlor वाली wrong होती. Oh no, see, मैं ऐसी नहीं हूँ. मुझे ये सुनाई देता ना, ये दिखाई देता, मैं 1 सेकंड में वहां पहुंचती. मेरे सामने करके दिखाओ कैसे करते हो. So yeah, that's a personality thing, but yeah, this is not on Alia कि वो उसकी ना सुनती. It's on the parlor वाली कि how are you addressing domestic violence that's happening around you. And she was indifferent to when he was also being beaten up, because the parlor wali thought it's still Alia who's being beaten up, right? When actually Hamza was being abused too. So for her, abuse has no no meaning to her. Like she has, for her, so bechari, that's all she could say. Yeah. अच्छा, नवीन, I would like to answer this. देखो, एक चीज बड़ी क्लियर थी जब बात की जा रही ना कि कीबोर्ड के ऊपर आके या ट्विटर के ऊपर आके आप वॉरियर बनते हैं. ओपिनियन रखना आसान है, स्टैंड लेना मुश्किल है. शी हैज दिस ओपिनियन कि हाँ उसका बुरा हो रहा है, वो ओपिनियन अपने कस्टमर के सामने एक्सप्रेस करी है. कल कंकर निकल आया था, अब ये मसला हो गया. तो दैट इज द प्रॉब्लम दैट शी फेसेस. लेकिन हम ये बात करें कि क्योंकि एटमॉस्फेरिक्स ऐसे दिखाए गए हैं कि वो अपनी रियलिटी में देखते हैं, लाइक यू सेड कि जी वो इंटरफेयर करती तो रॉन्ग साबित होती. लेकिन जब आप गलत को देख रहे हो और आप इंटरफेयर नहीं कर रहे हो लेकिन बुरा महसूस कर रहे हो, तो फिर यू आर पार्ट ऑफ दैट बुराई.
You're part of the right, Naveen? problem. So Yes. you are part of the problem. So that's what we think. Even if you remember, I love that scene कि जहां पे वो जाती है टू दैट फार्मेसी, और जाके जैसे ही जाती है पहला रिएक्शन आता है उस फार्मासिस्ट का कि वो जाके उसके सामने एंटीसेप्टिक रख लेता है कि ये Yep. पिट के आई है। तो वो Exactly. नॉर्मलाइजेशन दिखा रहा है, क्या Yep. नाम है, वाइफ बीटिंग की या उस बिहेवियर की, कि लोगों को पता है किसके साथ ऐसा होता है। तो Yep. पहले जाते साथ ही उसके सामने एंटीसेप्टिक आ जाएगा, दूसरा फिर उसके सामने सैनिटरी पैड आ जाएगा, चलो ये प्रॉब्लम होगी बिकॉज Yep. बच्चा नहीं हो रहा, सो Yep. शी इज हैविंग हर डेज। तो बेसिकली कहने का मतलब यही था कि जब लोगों को पता होता है एंड वो देख के अनदेखा करते हैं, बुरा दिल में जानते हैं, स्टैंड नहीं लेते हैं, वो Yep. दिखाया गया है बड़ी खूबसूरती से कि किस तरह से सब कुछ बड़ा नॉर्मलाइज किया गया है। और ये Yep. इतना सीप इन होता है हमारी सोसाइटी के अंदर कि हमें दैट्स व्हाई आई सेड कि रियलिटी दिखाई गई है। Yeah. अब मैं बात करता Wait, हूँ wait, हमजा wait. की। Naveen also says, I understand what you're saying, but Alia ne kitni baar complain वापस दिया. That's normal. That's very या That's a normal. very See, normal, there's so many normal questions उसी out there. domestic इसी And हाँ I feel like, एक second, Odi, Naveen, I know two women personally in my life, okay, जिनको एक point आया, उसके बाद उन्होंने step लिया, उससे पहले नहीं. Because there's so many complexities in this, क्योंकि वो हमेशा दिमाग में होता है कि शायद बदल जाए, शायद बदल जाए, शायद कल ना करे, you know, परसों ना करे, because they want to save the relationship. और यहाँ भी आलिया ने कितनी try की. It's also After, love, right? you know, सर से पानी ऊपर गुजर गया, then she took that step. Now some people are like, क्यों गुजरने दिया, पहले कर देती, but that's on the person, and I'm not gonna sit here. That's like victim blaming to me. You know, I feel या like you need to be more supportive with that. That's how No, I it's feel. also because she's in love. She thinks he has explained to her, this is love. You Yeah. take it, and I give it to you, and you take it, and this is love. So that's her definition of love. To make her understand so many things her mom had to show her until she suffered that pain of losing her own baby after carrying it for so long. Yeah, She didn't understand that. exactly. So that this is not love. This is toxicity. या She didn't understand that. So you can. This is It's also a very very common behavior for a domestic Yep. abuser victim, right? The Yep. victim themselves. They take two steps forward and then they move 10 steps Yep. behind. So Yep. this is very True. normal, and we see Normal. it all the time. Yeah. एंड नवीन, टू आंसर योर क्वेश्चन, लाइक आई वाज सेइंग कि हमजा के कैरेक्टर की जो बात है उसका कैरेक्टर आपका आंसर है। हमजा का कैरेक्टर दिखाया कि जी इज अ क्लासिक नार्सिसिस्ट, जहां पे Yeah. वो आपको बताएगा कि जी जो भी हो रहा है लाइफ में गलत वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, ठीक है, या मेरी दारू की वजह से हो रहा है, मैं पुरानी। Yeah. और वो Yeah. करता कैसे है, अगर आप बार बार देखें, जब उसको पता चलता है कंप्लेंट हुई है, ही डिडंट गिव अप जब तक उसको ये पता ना चले कंप्लेंट की किसने थी। ही इज सो Yeah. इंस्टिगेटिंग, बार बार Yeah. देखेगा, बार बार ताने मारेगा, कंप्लेंट किसने की थी। सिमिलरली जब उसको ये पता चलता है कि जब आलिया बोलती कि आप पब्लिसिटी मत करना कि मैं दारू की एंटी एडिक्शन लेने आई थी, और गलती से उसके सामने वो बंदा बोल देता है कि जी कल से आप दारू नहीं पियेंगे, मैंने सुना आप छोड़ रहे हैं, जब तक उसको ये पता ना चलता कि मेरी ये बात किसने बाहर की है या ऐसी क्या बात है, वो Yeah. पीछे पड़ा रहेगा। ही Yeah. इज एन अल्कोहलिक के वो उसको खाने के पहले सीन के अंदर खाने के साथ उसको शराब चाहिए, Yep. फिर उसके बाद ऑफिस जा रहा है दारू पीनी है, दारू पी ब्रेक रहा ले रहा है दारू पीनी है। और एक और चीज बड़ी अच्छी है हमजा के कैरेक्टर की कि वो जो उसका अब्यूसिव नेचर है वो दिखाता है कि जी जब आप अपने ऑफिस डायनामिक्स में हैं एंड यू आर इन अ पोजीशन ऑफ अ टीसी टिकट कलेक्टर, लेकिन आप वहां पे गवर्नमेंट जॉब के रहते क्या काम करें, आप वॉशरूम साफ कर रहे हैं, तो वो जो ह्यूमिलिएशन है वो घर जाके भी वो बंदा क्या नाम है Yes. निकाल रहा होता है टुवर्ड्स द वाइफ। और ये बिहेवियर हम बंदों में बहुत ज्यादा देखते हैं, And Odi, राइट। narcissism यहाँ भी था, पूरी उसकी जो community है, they need him to sign off on these builders. पूरी community एग्जैक्टली कह रही है कि think about us, and he's like तुम्हारे बारे में मैं क्या सोचूं, अपना ही नहीं मेरा हो रहा, right? So it's like या that shows कि it's me, मी and मी course. थॉरली He and didn't put Antora, alcohol. let me take this and then we come to you. Okay. Ashna says, like in the Thappad movie, Tapsi took a stand, and in Darlings, Alia's character is different because both are different women. And the irony is, we all know these women around us. Exactly. ट्रू ट्रू Everyone is not from a cookie cutter. Everyone thinks and does things differently. Antora, go ahead. या So the other thing I really to extend Odi on your point, he's a narcissist because he quit alcohol for himself. He didn't quit Yeah. it for Alia. He went Yeah. back and said, "Oh, you're pregnant. I'm going to quit." He didn't do that. He only Yeah. quit because he had some liver problems. Yeah. So या yeah, so very very well written character.
And he and that showed too. her, उसको दिखाया कि तूने प्रेगनेंसी की बात की है तो अब मैं छोड़ रहा हूँ. ये नहीं Yeah. उसको बताया कि मुझे एक डिसऑर्डर है, डिजीज है जो अगर मैं पीऊंगा तो I will die. You know, so he's Yeah, and putting then it Yeah. on her again. he goes out and tells everybody, I'm a TC, I'm a TC, I'm a TC. But in reality, he's a toilet cleaner. Toilet cleaner. Yeah, he's a toilet cleaner. And that too, जो विजय वर्मा ने जो मैनेस चाहिए था, जो नार्सिसिज्म चाहिए था, जो विशियसनेस चाहिए थी, वो इतनी खूबसूरती से वो लेके आया अंडरस्टेटेड प्ले करके. मतलब विजय वर्मा को आई हैव सीन इन शी, विजय वर्मा को आई हैव सीन इन पिंक. यही शेड्स उन दोनों करेक्टर के भी थे. लेकिन यहाँ पे जब आपको फुल बॉडी एक करेक्टर मिलता है, प्रोवाइडेड कि आप एक्ट करें अगेंस्ट शेफाली शाह, प्रोवाइडेड कि आप एक्ट करें अगेंस्ट क्या नाम है आलिया भट्ट, तो मेरे लिए ही वॉज अ स्टार ऑफ द फिल्म. वो करेक्टर इसलिए लोगों को अच्छा लगता है या नफरत होती है क्योंकि वो परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी है. विजय वर्मा ने Good, yes. या विजय वर्मा ने इंश्योर किया है क्या नाम है कि अगर ये मेरा कैरेक्टर है, वो उसको इस तरह से प्ले करे कि एक नॉर्मल प्रोग्रेसिव आदमी, कि मैं प्रोग्रेसिव हूँ जी, मैं कमाता हूँ, गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, ये बंदे आपको अपने इर्द गिर्द नजर आएंगे. लेकिन इन द क्लोज डोर्स, इन देयर पर्सनल स्पेस, वो कितने बड़े अग्रेसिव हैं, कितने बड़े मेनेसिंग है, उसको दिखाना, दैट वाज द ब्यूटी ऑफ इट. और ये हमें पहले सीन से पता चल गया था. जब वो उसको 100%. वेट करवा रहा है, ही इज नॉट ऑन टाइम, और आते साथ ही उसको पहले कहते हैं जी मैं तो जॉब लेके आऊं Yeah, गवर्नमेंट की, और yeah, बाल खोल दो. तो बेसिकली आप उस लड़की की जो आइडेंटिटी है उसको भी चेंज कर रहे हैं बिकॉज यू yeah, वांट हर टू हैव द आइडेंटिटी दैट यू वांट टू गिव हर. सो yeah. शी वाज विलिंग टू गेट दैट बोरोड आइडेंटिटी. लेकिन किस तरह से फिर ये कैरेक्टर्स आपस में इंटरप्ले होते हैं, दैट्स द ब्यूटी. या Yeah. Odi, in the review we did on Darlings, मैंने वहां भी कहा था कि ये जो foil था ना between Hamza and Zulfi was very beautifully done. एक तो जुल्फी के कैरेक्टर पे आती हूँ, लेकिन that scene between them जब वो स्कूटर पे थे and side दैट mirror में जो वाज हमजा की आंखें दिखती है ना, I was like जुल्फी गया because जुल्फी की Hamza शामत आई. looked so evil. Like पता था कि इसने कुछ करना है कांड and हुआ उसके बाद. But I felt like Zulfi is in trouble, and I love कि Zulfi इतना caring है. He सीधा वो बद्रू को कॉल करता है कि उसको पता चल गया है, watch out, and I love कि उसने ये भी कहा था बद्रू को, because obviously he sees the bruises on her neck. He sees that she's hurt, especially जब वो kitchen वाला scene था and she's crashing the plates. वो कहता like जो बात मुझे समझ आ रही है तुझे क्यों नहीं समझ आ रही, क्यों समझ आ रही. that was so beautiful. क्योंकि हम कहते हैं कि girls need to support. There's a lot of men, और इस movie में भी दिखाया कि men are ready to support as well. एक ये जुल्फी हो गया, एक पुलिस इंस्पेक्टर था, एक वो Qasim, all of these men are there who are ready to help you. It doesn't matter कि वो कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, क्या job है, कितना पैसा कमाते हैं, has nothing to do with it. It has to do with their character. तो मुझे जुल्फी का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा. He was sweet, he was nice, he was cute. जैसे वो शमशु और बद्रू का साथ देता है with their endeavors, जैसे कैसे वो वीडियो बनाता है, and कैसे वो that whole interaction between Khala and Zulfi was amazing. I love it. I love it so much. मुझे शुरू में लग रहा था जैसे सबको लग रहा था कि he has a thing for Badru, है ना? क्योंकि Odi and I, when we reacted to the teaser, when we reacted to the trailer, हमें बार-बार लग रहा था कि oh my god, this is Haseen Dilruba, है ना? Which was an amazing movie. I was so happy जब ये movie देखी, it wasn't Haseen Dilruba. यहाँ पे we find out कि वो तो खाला से प्यार कर, वो कहता भी I like खाला. तो आंटी नहीं, मुझे खाला क्यूट लगती है. He was like मुझे खाला क्यूट लगती है. He's like दिल की बात है ना. And then I love कि शेफाली का कैरेक्टर कैसे चेंज होता है. One second prior, she's ready to throw him under the bus कि इसने किया है जो भी किया है. And then she goes नहीं जुल्फी को मैं जानती हूँ, वो तो कर ही नहीं सकता. And then the moment they share under my the favorite doorframe, जैसे कोई mistletoe है ना, like under a mistletoe you're supposed to kiss. यहाँ कोई mistletoe नहीं थी, लेकिन that kiss between Zulfi and Shamshu was amazing. पूरा वो भूल गए क्या ड्रामा हो रहा है आयत वाले. And they're just kissing, and then Badru was like, "Mom, really? Like she was like, Ammi, chalo."
It's awesome. My Okay, Yeah. we're nice. thing did was Please, there's 470 of you guys watching us right now. Please like karo, subscribe karo, हमें support कितने करो. व्यूज है, कितने कितने वॉचेस है कीर्ति? 462. wow. तो एटलीस्ट 400 तो लाइक्स बनती है. 400 likes दो हमें. Okay, Yeah. Ashima says, I personally know someone who has gone through the same thing. Luckily, he took a stand and now he is in a better place. Violence happens to all genders. 100%. True. 100%. So the other Yeah. thing I wanted to share was with the Zulfi, when he goes and he knows what the mother and daughter did, then he goes back to the police station with the canteens, and then he's asking them, so kidnapping में bail मिल जाता है? मैं स्टोरी लिख रहा हूँ. वो कितना cute था. I was like, he's so predictable right now. He's looking so bad right now. लेकिन Yeah, so कितना that was cute my था. favorite thing about him, because I could relate. He's helping, but he's also a little scared, like what's gonna happen to him? इसमें फंस गया तो. ओडी की Like पाउट कर की दो कसम. तुमको ओडी की पाउट की कसम. Pout ओडी pout. Likes मिलेंगे. Darlings, like please. Like us, darlings, like us. Yeah, Yes, and Andorra. जुल्फी का जो इंट्रो वाला सीन था, एक तो मुझे हर एक का इंट्रो सीन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है. शेफाली's इंट्रो सीन, कैसे वो कड़ी पत्ता का प्लांट चोरी कर रही है क्योंकि उसको बोर्डम हो रही है, वो कहती घर बैठी हूँ तो कुछ ना कुछ तो करूंगी मैं. So I love that establishes her character. And ये जुल्फी का भी जो कैरेक्टर जब वो मिक्सी बेचने आता है, and he started at 400 rupees. And then वो कह रही so फिर आलिया के मैनिपुलेशन करती है कि 50 rupees है, 50 rupees से मैंने ointment ली है ना, because her bruise is showing. And he's like, okay ठीक है, so. And then he doesn't get that 50 लेके चला जाता है. I was like, कितना cute है ये बंदा. He was shown so innocent, so supportive, पूरे movie में I felt like he was the one that had थोड़ा बहुत of like conscience कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है, इतना मत करो, कोई देख लेगा, कोई सुन लेगा. He was so flummoxed. And एक सीन था जिसमें वो कहता कि प्रेगनेंसी में मारा है, मेरा जी करता है कि मैं गला घोट दूं. शेफाली कहती घोट दे, पीछे बैठा है तेरे. And वो घूम के देखता है like what the hell is happening? He has broad daylights out that moment, उसको समझ नहीं वैसा हुआ क्या. अच्छा, anyways, Zulfi, Zulfi for me is the rainbow in the film. He is that, the sunlight in the film, कि जो आपको पता है कि ऐसा करेक्टर है जो एक पॉजिटिविटी लेके आता है, एक होप लेके आता है और एक हेल्पफुलनेस लेके आता है, कि जिसको पता है कि मैं अपनी कैपेसिटी के अंदर क्या कर सकता हूँ, वो ये दिखाता है. आई रिमेम्बर जब उसका पहला सीन था, वो जो बर्तन बेचने वाला था, उसके अंदर ही वॉज कॉन्स्टेंटली स्टक बाय द ब्रूजेस आलिया हैड ऑन हर नेक. वो बार बार उसको वही देख रहा था, बार बार उसको वही देख रहा था. एंड देन ही वाज लाइक ओके सोअर पेन ऑल दैट. सो ही वाज कंसर्न्ड एंड ही हैज शोन के स्पाइन होनी कितनी जरूरी है. एक विसल ब्लोअर होता है ना, बेशक वो अपना नाम लेके ना है, लेकिन ही वाज अ विसल ब्लोअर इन द फिल्म. क्योंकि उसको पता है कि ऐसे आदमी से मैं अपना नुकसान भी नहीं चाहता, but I hate that person and I can't stand any more, जुल्म और whatever. तो वो उसके अगेंस्ट जाके क्या नाम है, वो सारे स्टैंड लेता है. वो साथ साथ मोबाइल भी लोगों को फ्राम करता है. he is this pleaser as well, कि मैंने लोगों को कैसे ना, वो जो पता चलता है ना कि जब उसको दिखाते हैं पुलिस स्टेशन में, and you just see his look on his, I was like, what is he doing? Like, what is happening here? But I love that they always show that this is a very supportive, feminist character, and I love that. Okay, he was true feminist. She's saying, listening to this review, I feel like taking a fake sick leave tomorrow to watch the movie. I don't know about fake, because Zarur movie dekhna, it is so Kanchan, we'll see it together again. I want to see it again. जो we'll see it together. या हम तेरे साथ देखते हैं. Okay, अच्छा, तो ये 4 कैरेक्टर्स के ऊपर तो हमने बात की है. Let's talk about ये जो butcher था, Qasim. He has, I think, the fewest lines, obviously, of any of the supporting cast. उसने बहुत ही कम बोला है, तो हर सीन में उसकी presence थी. I think it's Rajesh Sharma उसका नाम है actor का. He is a brilliant actor. ये जिस भी movie में आता है, he fits into this role like no one's business. Okay, I still remember, like, for example, total opposite role देखते हैं, Tanu's Manu Returns. उसका भाई वो बना था. He was so hilarious, है ना? यहाँ पे he is this silent, character, but we know watching him,
he has some role to play in this story. Because he's very attentive to Shamshu and Badru. He watches out for them. Uski aankhein hamesha tiki hoti hai unpe. So it's like there is some history there, but we have no idea what that history is. I love the foreshadowing that happens. When they show him, they show the cleaver and he's like cutting the meat. He's like chopping the meat. And this is something that's going to happen in the movie that's not going to be that great, but he is going to be involved in it. I feel like uski body language so अच्छी थी, पर जैसे वो इन्वॉल्वमेंट वो दिखाता है ना इन द क्लाइमैक्स ऑब्वियसली, लेकिन इवन बिफोर जब शमशू जाके कहती कि do you have like that जाने पहचान वाला in a mental asylum, working there, and he's like don't do it, but obviously he does it क्योंकि they get the medication. It's also मुझे ये character बहुत अच्छा लगा. Yeah, because we thought that Shamsu and him are having something because of their eye contact, something like that. That these two are having an affair, but they share a relationship of respect. So that's something that comes in. We know much later in the movie. That was also beautifully done. Beautifully done. अच्छा, तो कासिम कसाई जो हैं, राजेश शर्मा, ठीक है, आई थिंक वो एक ओल्ड ट्री की तरह नहीं होता जैसे जिसको सारे राज पता होते हैं. ही नोज एवरी राज ऑफ द सोसाइटी, ही नोज द डायनामिक्स के चल क्या रहा है, एंड ही इज जस्ट एब्सॉर्बिंग देम कि जी हाँ ठीक है. और अंदर खाने में इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स वो क्या रोल प्ले करते हैं, शम्सु निसा के साथ उसकी क्या इंटरेक्शन है, क्या अलाइनमेंट है, वो जिस तरह से उनको हेल्प आउट कर रहा होता है स्पेशली टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स, इट्स ब्रिलियंट. एंड ही डजंट रिक्वायर अ सिंगल लाइन. उसने अपना काम के थ्रू ही अपनी स्पोर्ट दिखाई है. एंड हैविंग सेड दैट, आई फॉरगॉट टू से वन थिंग. ना रणबीर कपूर, ना रणवीर सिंह, व्हाटएवर अदर hot faces, even Hrithik Roshan. Roshan Matthews is my first hand crush right now these days. Roshan Matthews in Zulfi character, he's too hot for me. I have seen his Malayalam films, I have seen his South Indian films. He's brilliant. Kirti, once again I tell you, was that जो OTT में release हुई थी अनुराग कश्यप की movie, when they find the money in the drain, वो कौन, I forget the name of the movie. That was Choked. Choked, I guess. Yeah. I think he was brilliant in there. I feel like Roshan Matthew is a great actor because वो भी ना अपने expressions के साथ खेलता है, body language. Even though, like I feel like out of all the actors, Shefali Shah ऐसी है जो पूरे scene में if she doesn't have a dialogue, that's okay. She doesn't have to do anything. उसकी mannerisms जो होती है ना, she steals the scene. And यहाँ भी there were a lot of scenes where Zulfi is not the main attraction, लेकिन Zulfi plays a very big role in those scenes as well. वो चुप चुप अब जैसे वो expressions देता है, अब disbelief कि ये क्या हो रहा है, I feel like he's a perfect cast in this movie. And Zulfi, like I said, Roshan Matthews, Kirti, and audience, whosoever is listening, please watch Muthon. It's a great Niven Poli की फिल्म है, and आमिर का कैरेक्टर था. If you haven't seen it, must see it. Kirti, you also please see it. It's a great film. Anyways, the rest of the cast now. Odie from GK. Odie, where do you live? I live in Pakistan, GK. There you go, GK. You got your answer. Okay, go ahead. And in my home, a safe place. Yeah. So, coming back to the other remaining cast of it, that parlor Auntie Noor, she was very noticeable, and she's a great actor, to be very honest. वो जिस तरह से, like we already mentioned, कि she's just knowing everything and she's just ignoring everything. She's not interfering. There is a moment, क्योंकि वो अपने आप को भी लेके concern है, जहाँ पे जब वो builder आता है and she tells this to Hamza's character के भाई हमारा भी सोचो. तो वहां पे उसको पता कि जी मुझे भी अपनी बेहतरी चाहिए. और वहां पे हमें आलिया के ना कैरेक्टर की एक और खूबसूरती जो नजर आती है इन दैट पर्टिकुलर सीन. व्हेनेवर शी इज इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, शी गोज इनटू अनदर वर्ल्ड. शी इज ड्रीमी. चाहे वो पहला सीन था, चाहे यहाँ पे जब वो प्रेजेंटेशन देख रही होती है कि स्विमिंग पूल है, ठीक है, स्विमिंग पूल है, एंड क्या नाम है, बड़ी बिल्डिंग एंड ऑल दैट, एंड शी इज beside this pool and she's enjoying the pool. वो sunlight ले रही है, ऐनक पहनी हुई है, she's looking hot, she's in red. So that bikini was cute. That sun hat was so cute. I loved it all. Yeah. And so एक second, Odie, तुमने ये बात की ना आलिया के कैरेक्टर पे. We missed this scene real quick. Let's just talk about it. हमने अपने रिव्यू पे तो बोला ही था
there's 2 scenes where she has red on, है ना? First Yeah. time she wears the red, she transforms herself into a seductress, है ना? The red gown, the loose hair, the red lipstick, क्योंकि उसको अपने husband के साथ ना थोड़ा करना है so she can have the baby, right? It doesn't end up that way क्योंकि वहाँ काका आ जाता है, चाचा जो भी उसको कहती है, which was hilarious. Raman Kaka. Raman Yeah, Kaka. that was so funny. So, okay, that happens. Then you see the next time she dons that dress, totally different personality, totally different, body language. Jahan pehle she's being this sweet, innocent wife. Yahan pe she has lived life. She has lost a child. She is sick and tired of the life she's leading. So she puts that dress on, this sexy red dress with all her bruises. Discover nahi hai, bruises dikh rahe hain, loose hair nahi hai. There's a ponytail because he doesn't like that ponytail. तो उसने ponytail करना है. So I just thought it was so much strength there. Then जो game उसने खेली थी with that high heel stiletto, उसने खेली. You know, I feel like this was a great scene क्योंकि वहाँ हमजा कह रहा है, oh wait, don't do it. लेकिन जब तू करता था तब तुझे issue नहीं हुआ. अब वो कर रही है तो तुझे problem हो गई है. So I really thought that was great scenes. आई थिंक वो जो 2 पर्टिकुलर सीन्स है ना, यहाँ पे मैंने लाइक इन माय रिव्यू आई आल्सो सेड कि मुझे उसके अंदर एक सेडक्ट्रेस से आप रिबेल की तरफ कैसे जाते हो, बीइंग अ रिबेल, वो बड़ा खूबसूरत तरीके से गाया गया कि पहले इन लव शी इज रेडी टू एक्सपेरिमेंट टू शो हर लवर एंड हर हस्बैंड कि मैं तेरे लिए सेक्सी होके दिखा दूंगी तो खुश हो जाएगा, बट इट फेल फ्लैट ऑन हर फेस सो मच एंड सो कि शी गेट्स बीटन अप सो बैडली इन दैट बिजार गेम कि चल देखते हैं तुझे लगती कि नहीं लगती है. एंड ये जो सीन था, isn't this a Salman Khan famous scene? एक मूवी सलमान खान there की are many थी, scenes, as yeah, a there are many scenes also, yeah, it's not Salman Khan, लेकिन the use of heel कि मैं तेरी फेमिनिज्म को, तेरी सेक्सुअलिटी को वो उठा के तेरे ऊपर ही मारूंगा. 100%. आपको वो मेटाफोर समझना चाहिए कि यहाँ पे जो वो उसके लिए कर रही है, ठीक है, इन लव, वो उसी के मुंह पे मार है, उसी से उसको जख्मी कर रहा है कि स्क्रू योर फेमिनिटी, स्क्रू योर फेमिनिज्म, स्क्रू योर सेक्सुअलिटी, स्क्रू योर लव, दिस इज योर वर्थ एंड दिस इज द रियलिटी. आई एम द कंट्रोलिंग बास्टर्ड एंड यू हैव टू बेयर इट. लेकिन टुवर्ड्स द रिबिलियन मोड जब वो आती है, वहां पे शी इज embracing all the redness, all the bruises, and she's like, okay, now see what I'll do. And the way she does it, जब वो करती है, जब उसको हिट करती है, I love what she said. She said, बेटी थी. And I was like, damn, because he is the one who said कि मुझे बेटी चाहिए, मुझे बेबी चाहिए, बाबा नहीं चाहिए. She was the one who said कि मुझे बाबा चाहिए. और यहाँ पे the way she pours her heart out, she shouts at her lungs out. वहां पे आलिया भट्ट की जो आपको एक्टिंग नजर आती है, माय गॉड, कि आपके रोंग उसको अपनी माँ का जो लाइक प्रोटेक्टिव साइड था वो नजर नहीं आ रहा था. नजर नहीं आ रहा था. Unfortunately lost her child. She understood then कि मेरी माँ ने क्या किया मेरे लिए. So I love that. एक तो वो जो टाइमलाइन थी जहां उसने क्रॉस किया, oh god, that was so heartbreaking. That Alia is personalized phenomenal in this movie. that personalized milestones Alia deserves every accolade she gets because वो इतनी believable है ना. She doesn't overdo it. Okay, let's just take this comment from Akbar. He's asking कल लाल सिंह चड्ढा का review video बनाओगे ना आप? So you know what? First day, first show में लाल सिंह चड्ढा देखने जा रही हूँ, and वहां से तुरंत देख के ही मैंने रिव्यू डाल देना है अपना. few thoughts that I feel seeing the movie जो आते हैं जहन में मेरे. Then मैंने ओडी से बात की है, जब ओडी देखेगा, जब हैरिस देखेगा ना, because मैं तो first day first show देख रही हूँ, they are also have to watch it. Then we are gonna do a live review मैं उनके साथ भी करूंगी, and हमने बात करनी है लाल सिंह चड्ढा के ऊपर and also Forrest Gump के ऊपर. You guys, I am born and raised in the US. मैंने Forrest Gump पता नहीं 50 बार देखी हुई है ना. So मेरे जहन में I wasn't even going to watch this movie. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था इस मूवी में, लेकिन Coffee with Karan के एपिसोड में जैसे आमिर ने बात की about the dedication and his passion and hard work, तो मुझे लगा कि no, I'm not gonna write this movie off. I'm gonna go watch it and see. तो फिर मैं खुद अपने व्यूज दूंगी लाइव उस मूवी को देख के, and then we will come live one day, maybe Saturday, maybe Sunday, maybe Monday. I don't know when.
एंड अकबर शेख, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने अपना स्केड्यूल पहले से डिसाइड किया हुआ है. Yeah. वी हैव टू फिट इन लाल सिंह चड्ढा इन इट, Yep. बिकॉज लाइक कीर्ति सेट के शी इज गोइंग फॉर द फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो वो रिएक्शन तो फौरन आपको मिलेगा, Yep. लेकिन डिटेल रिव्यू के लिए वी हैव टू जस्ट स्केड्यूलाइज इट, बिकॉज हमारी 100%. ऑलरेडी एंड डेट्स जो मुझे है. लगता है कि so many people will have so many things to say on the movie, तो मुझे लगता है कि हमको ये लाइव रिव्यू करना चाहिए लाल सिंह चड्ढा का, तो हम वो ट्रू जरूर करेंगे. We just have ट्रू to think of a time जब हैरिस देखाएगा मूवी, जब ओडी देख सकेगा मूवी, उसके बाद हम ये रिव्यू करेंगे, and then प्रॉब्ली मंडे, you all प्रॉब्ली come मंडे, या and then we will talk about the movie, because I'm sure a या lot of people are going to say a lot of things. I really hope the movie lives up to this hype that is created. And जहां तक ये मूवी है, I don't know कि इसको इतनी हाइप मिली थी या नहीं मिली because of various factors. पर मुझे लगता है कि डार्लिंग्स को जितनी हाइप मिले उतनी हाइप कम है, because I think स्टोरी टेलिंग ही बहुत अच्छी थी. It wasn't spoon feeding. यहाँ कोई लेक्चर नहीं था, कोई कोई प्रीचीनेस कोई नहीं था. लेक्चरबाजी नहीं है. या ट्रू यहाँ पे कम डायलॉग्स में भी बातें होती थी. यहाँ it was a dark comedy. So Odie, I have a sarcastic, dark sense of humor as well. मुझे slapstick comedy पसंद नहीं है. Okay, सेम है, यू मुझे नो ये इट, या situational comedy पसंद है. And like comedy you have to think about, थोड़ा दिमाग use करो अपना, क्योंकि यहाँ इस मूवी में हर सीन में ना there's some kind of message there, whether it's a metaphor, whether they are hinting at the future, foreshadowing. I loved it because this movie has a lot of hard hitting scenes, but they balance it out with a sense of like comedy as well, not slapstick comedy, but situational. जो interactions होते हैं between the characters, the two pivotal jail scenes, those were funny, but they got the important messages across too. So I really enjoyed that. तो कीर्ति, लोगों को ना बेसिकली डार्क कॉमेडी का मतलब समझ में नहीं आता. फॉर देम इट्स अनीस बाज़मी ऑल द वे, के क्या नाम है, आपको बस स्लैपस्टिक करना है. तो वो वाली चीज नहीं है. डार्क कॉमेडी के अंदर सिचुएशन इज सो ग्रिम, सिचुएशन इज सो हॉरेबल, लेकिन टर्निंग इनटू अ कॉमेडी के आउट ऑफ दैट सिचुएशन, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. तो यहाँ पे देयर इज दिस सीन जहाँ पे ये दोनों माँ बेटी को है उनके घर लेके जा रहे होते कि हमजा तूने अपने घर में छुपाया हुआ है ऑल दैट. वहां पे आलिया कहती है कि जब गुड लक बट रहा था हम क्या कर रही थी, सॉरी शमसो ने कहती है जब गुड लक बट रहा था हम क्या कर रही थी. एंड बदरो नसा आलिया कहती है कि हम खाना खजाना देख रही थी और दोनों ने कानों में एयरफोर्स डाले हुए थे. एंड आई वाज लाइक दैट इज द डार्क कॉमेडी ऑफ द सिचुएशन. Yes. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, एक ये इतने जब उसको पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, तो शेफाली कहती कि अगर शक्ल हमजा पे गई तो, एंड तो बदरू कहती तो बेच देंगे. सी सो आपको क्या नाम है, ये चीज अंडरस्टैंड करनी जरूरी है कि उस तरह के मैसेज को दिखाने के लिए इस तरह के जॉनर में आना एक तो टफ भी होता है. वो बैलेंसिंग एक्ट बड़ा जरूरी है जो जसमीत केरीन द डायरेक्टर हैज अचीव्ड, लाइक A1 क्लास डायरेक्टर. और जो मास्टर क्लास आलिया भट्ट ने दी है, शेफाली शाह ने दी है, हमजा ने दी है, दैट विजय वर्मा एंड रोशन मैथ्यूज ने. देखिए यही बात खूबसूरत है इस फिल्म की कि जब आप करेक्टर्स को बताते हैं. आलिया इज नॉट आलिया फॉर मी, आलिया इज बदरू. शेफाली इज नॉट शेफाली फॉर मी, शी शम्सुल. आई हैव सेड हमजा इंस्टेड ऑफ विजय वर्मा. तो ये चीज हमें नजर आई थी कि ये करेक्टर्स जब वो अपनाते हैं तो फिर आपके सामने से वो एक्टर का जो स्टार पावर है वो खत्म होता है और आपके सामने एक करेक्टर चलता है. तो वो चीज दिखाना. एंड कूडोस टू आलिया, लाइक वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कि एज हर फर्स्ट प्रोडक्शन प्रोजेक्ट आप अपने पे फोकस ना लाते हुए सबको इतना इंपॉर्टेंस रोल दे कि इट्स अ फिल्म नॉट माय फिल्म. क्योंकि हमने बहुत सारे लाइक इवन कंगना यूज्ड टू डू इट, बी इट हर झांसी की रानी, बी इट इवन दिस टाइम इमरजेंसी. सो इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स it's her thing only. It's my show. It's her baby. But here, and I said this in our review too, Odie, ki Alia being the producer, she could have easily said कि I need to outshine everyone. लेकिन वो movie नहीं बनती, नहीं बनती. You are only as good as the people around you in anything you do. और यहाँ cast इतना amazing था ना. You have a powerhouse like Shefali Shah you're going against with, or with, right? A lot of scenes, it's Alia and Shefali, and they don't overdo each other. They're very natural and supportive, and it was amazing. And one of the things that make this amazing movie is the dialogues. Yahan ek comment hai from Age to the Bizza, the dialogue, enough playing defense, now it's time to bat. Amazing scene, amazing dialogue. ओडी, ये हमने पहले भी बात की है कि इस मूवी में ना वो मुंबई फ्लेवर आता है, वो उर्दू का टच है. आई थिंक उर्दू इज सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज.
तो yes, some words I was like ये क्या है? So context में थोड़ा पता चलता है, you know, एक वो सीन था जिसमें वो कह रही थी कि अम्मी ये अमेरिकन वर्ड कहा था पता नहीं, बाहर की जो मुर्गी है ना वो भी बहुत, I don't know the word she said, but गफलू, गफलू, yeah. तो मुझे वो पता नहीं word क्या है, but obviously she's saying, man, the food is like huge, like fat. फ्लफ, Yeah. फैट, या तो you know these words were really cute. and ये dialogues में बैठता था, especially वो जो इंस्पेक्टर वाला सीन भी है कि आप निस्सा निस्सा करते हैं, हमारे में निशा है, you know that means darkness, and so that happened. Then खा खा खो, you know जो भी है, that was really funny as well, क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि you know nuances हैं. तो I feel like जो locality उन्होंने show की थी setting के through, it was 100% looking real. कोई उन्होंने चमक धमक नहीं दिखाई, they showed reality. And for me, that was great. And reality means how you talk. Darlings, lux, you know, जो S वो तो लगाते हैं. प्लूरलिज्म उसका, हाँ वो प्लूरलिज्म जो आलिया ने Yeah. पकड़ा है कि डार्लिंग्स, Yeah. नेटवर्क्स, गुड लक्स, हाउस यू, प्लीज, तो ये सारी डायलेक्ट जो है वो खाली डायलॉग राइटिंग के अलावा जो उसने नुआंसेस डाले हैं, Mm-hmm. इट्स शेयर ब्रिलियंस, क्योंकि वो फिर एक करेक्टर को ना लाइफ देती थी कि हाँ ये डिफरेंट है. एंड आई थॉट, यू नो, जब मैंने ट्रेलर भी देखा था, इवन जब मूवी भी देख ली थी, कि she is, you know, a far cousin of Safina from Gully Boy, because Yeah. she was also Muslim. She has that Yeah. zing about her, and same way, this girl has zing, but she is more zinger than Safina, obviously. So yeah. Yeah. 100%. Okay. अच्छा तो yeah. Yeah. So do you want to talk about, you know, हम आगे की प्रोडक्शन बात कर रहे थे ना, it's called Hello. What a nice apt name for how we think Alia is. जो beginning में जो Eternal Sunshine. yeah, I Eternal love it. Sunshine है ना, and you know the cartoon that introduces the The production, I thought cat it was and the sun. beautiful. Oh. It was fun, it was cute, and then the movie starts, you know, please, I loves you, you know, and I loved it. I set the tone of the movie. एक तो शुरू शुरू में मुझे लगा कि कौन गा रहा है, because it didn't sound like Mika Mika to Singh. me, है ना, and I was like wait, is it Usha Uttam gonna sing Darlings, क्योंकि उसका Darling song था ना, मैंने कहा oh my god, फिर मैंने सुना, I was like ये Mika गा रहा है, because at the beginning you couldn't tell, then you can tell it's Mika, but I think he did a fabulous job. इस movie में ना जो background score है ना, I loved it क्योंकि it was comedic, and then it would slow down, and then the jazz would come up, and it would be intense, and you knew something was gonna happen. And Jesse Vijay Verma, he opens the door and says, "Darlings." I was like, "Shit, something is happening." So I feel like this movie had everything going for it. You know, even the songs, it wasn't like कोई नाच गाना हो रहा है. Ghana back mein play ho raha hai, and the movie is going on. So I really appreciated that. Not every movie needs like a litter of songs. नहीं तो इस मूवी को तो सॉन्ग्स की जरूरत थी नहीं, वो सिर्फ एक स्टोरी को प्रोपेल करने के लिए था. एंड दैट टू जब आपके पास गुलजार है, जब आपके पास विशाल भारद्वाज है, दिस कॉम्बिनेशन इज सो डेडली. लाइक मैंने पहले बोला, माय फेवरेट लाइन हैज टू बी डरते डरते ड्राई फ्रूट हो गए. मतलब इतना स्क्वीज हो चुके हैं कि ड्राई फ्रूट बन चुके हैं, पिस्ते पिस्ते पिस्ता हो गए. दैट लाइलाज सॉन्ग, इट इज सो ब्यूटीफुल सॉन्ग. एंड जब हम बात कर रहे थे ना डार्लिंग्स के भी, यू मेंशन्ड, I use this term darling so much. You know this because you are the victim of my darling. Every day मैं तेरा darling सुनती हूँ like 10 बार. Yeah. So for me, it is the word of endearment. It is expression of love. But in this movie, they have shown brilliantly that it is power and control abuse. It's all about that. The way he says darlings जब वो एंट्री मारता है, so you realize कि ये infantilize कर रहा है जिसको वो darling बोल रहा है. ठीक है, उसको छोटा करके, या ही इज शोइंग हिज सुपीरियॉरिटी कि जी मैं कंट्रोलिंग में हूं. तो वो प्ले किस तरह से किया गया, एवरीथिंग इज गिवन सो मच डिटेल. चाहे वो एटमॉस्फेरिक्स थे, चाहे वो म्यूजिक था, चाहे वो एक्टिंग थी, चाहे वो आप प्रोडक्शन वैल्यूज देख लें, घर का माहौल देखे, ये घर पे मैं होके आया हूं, दिस इज द लोकेलिटी आई नो, दीज आर द पीपल आई नो, आई रेजोनेट. And like you said in the beginning, Eternal Sunshine, I think, I saw more. We love you, Shah Rukh Khan. So Shah Rukh Khan, I love you for making this and for supporting this brilliant project. क्योंकि अगर आलिया है तो for I have heard her in one of her interviews. She's like, for me, other than Ranveer, Shah Rukh is my darling. So आपको अगर आपके पहले प्रोजेक्ट में
आप कंट्री का सबसे बड़ा स्टार अपनी प्रोडक्शन वैल्यू एसोसिएट करता है क्योंकि रेड चिलीज का नाम लगता है, Yeah. और वो नजर आता है कि कितने प्यारे प्रोजेक्ट में कितना जरूरी है। Yeah. और शाहरुख खान से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं जी, एक राहुल की फिल्म आएगी, एक पठान आने वाली है, कोई शाहरुख का डॉन आने वाला है, बट हियर इट इज ऑल अबाउट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग जिसको Yeah. उसने सपोर्ट किया और Because किस I खूबसूरती feel से किया। thankfully आजकल movies में story is the most important. या You know, इट इज द हीरो thank या God I'm loving it because I love to see content driven, things. So for me, this movie was fantastic. मेरे लिए this is the year's my like favorite movie of the year for sure. या मैंने ये या मूवी लगातार देख भी ली है a few times क्योंकि मुझे इतनी मैंने तो पांच पसंद दफा आई है. देखी है या You know, and Deepti Nair ये comment उन्होंने दिया है कि that scene when she decides to actually keep walking despite the cat crossing her ट्रू path. Yep, shows how she eventually evolved mentally, and that's true. That's a true freedom she attains. 100% क्योंकि फर्स्ट सीन ऑफ द मूवी एक नींबू था रास्ते में और वो क्रॉस नहीं उसने किया, साइड से गई एंड देन शी इज लाइक प्रेइंग. यहाँ पे a black cat crosses her path and she's like forget it and she goes straight ahead. That shows her growth. That shows that she is not bound by these little shackles anymore and she has grown off away from that. So that is the beginning of the change in her life. She's taking the मैं reins. I loved it. ना मेरे लिए ना ये पर्टिकुलर सीन से पहले की एक और सीन था क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है। Yep. शी शोज के शी इज डॉटर ऑफ हर मदर, यू नो Yep. शी वाज अबाउट टू शी वाज स्टैंडिंग एट दैट विंडो, आई थॉट कि शी इज गोइंग टू जंप, शी इज सुसाइडल राइट नाउ, ओके शी डजंट सी एनी Yeah. होप इन लाइफ, Yeah. एंड देन शी गोज टू डॉक्टर एंड सेज कि मुझे पेन किलर्स चाहिए, मुझे नींद की दवा चाहिए, आई नीड विलियम्स एंड ऑल दैट, एंड देन शी मूव्स आउट ऑफ द हॉस्पिटल एंड देन दिस सीन कम्स Yep. कि उसको जाके तो पहले मैं बेहोश करूँ ना जरा, Yep. उसको नींद की गोलियां चढ़ाऊं, उसको टीके लगाऊं, उसको जरा ठंडा करूं, एंड आई वाज डैम। वो जो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन है, ठीक है, वो खूबसूरती है इस फिल्म की। टक टक Yep. टक 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 आपको पता ही नहीं चलता कि क्या मोड़ आ गया है, ठीक है। एंड Yes. दैट टू लाइक आई सेड कि पेन एंड सफरिंग्स मेक यू डू सच थिंग्स कि वो आपका पर्सपेक्टिव पूरा चेंज करता है टुवर्ड्स लाइफ। इवन वो जो बिच्छू की कहानी थी कीर्ति, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट बिच्छू की कहानी 100%. या 100%. तो आई लव कि पहले जब ये हम कहानी सुनते हैं उसकी माँ उसको सुना रही है, कि एक मेंढक था, बिच्छू ने उसको पूछा कि मुझे ये नदी पार करा दे, तो वो कहता कि मैं तेरे पीठ के ऊपर बैठ के जाऊंगा, तो and then the mendek is like no, and he's like no, I have to cross it, so why would I do something to you? But at the end what happens, बिच्छू उसको डंक मारता है, and when she's saying this line वहां बार बार दिखाते विजय वर्मा को कैसे वो रिहा हो रहा है, कैसे वो बाहर आ रहा है कि वो बिच्छू है, and then the second time we hear this story, then Alia is narrating it, and ये बिच्छू मेंढक का जो कंपैरिजन इस मूवी ने किया है, I loved it, क्योंकि 100% मैं तो उसको वाइपर कह रही हूँ, but obviously he's a बिच्छू. No matter what, he's gonna come back to his fitrat. That is like a dunk marna, to the people he loves, and that's what he did. And love में कोई ऐसा करता है, so it's not love, it's more of control. It's more of this ego that things need to go my way, and I have this dominion over you. There's a lot of men around the world that feel that they can control how their girl, whether it's wife, girlfriend, whatever, what she thinks, what she wears, what she eats, how she looks, who she talks to. I feel like they think that, and yahan bhi wo baar baar usko tokta tha na, you have higher dreams, you think you're better than this, and जब वो उसे ऐसे comment मार दिया कि वहां हमें parking भी मिलनी है, तो वो कहता क्या park करेंगे, वो कहती है अपनी scooter, and he goes, oh, you don't think that I can have a car? So if she had said car, उसने कहना था, oh, you're thinking big, and then she didn't say car, oh, you don't think I'm good enough. So everything is a manipulation for this bichu, and that was amazing for me. And सबसे amazing तो वो था, आलिया कहती कि इसको देख के मैं खुद थोड़ी ना बिच्छू बनूंगी, मैं मेंढक हूँ. yeah And because she had already kind of crossed her lines a little bit. So at the end, she's like, no, मैं ये line cross नहीं कर सकती because he's gonna haunt me for the rest of my life, like your dad haunts you. And that's a beautiful that look in Shefali's eyes when she says that, and then you realize कि oh shit, ये कोई भाग के नहीं गया, छोड़ के नहीं गया, शेफाली ने इसको ऑफ किया है. I thought that was brilliant. मुझे तो पूरी मूवी में ये I didn't expect that twist. I thought it was amazing.
अच्छा, जो बिच्छू और डड्डू की कहानी है ना मेंढक वाली, उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे जो लगता है कि बिच्छू मेंढक पे सवार होता है, वो मेंढक की बैक पे, कि मुझे नदी पार कराओ, तो वो आपका सहारा लेगा, वो आपका उस सिम्बियोसिस में आएगा जहां पे वो आपको बार बार कहेगा मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है, मुझे सीधा कर दे, लेकिन डंक भी आपको मारेगा, द वे हमजा वाज डूइंग। एंड टुवर्ड्स द एंड व्हेन शी रियलाइजेस के इनफ ऑफ बीइंग दिस क्रैप, आई एम नॉट अ बिच्छू, आई Yeah, कांट बी हिम, आई कांट बी दिस मैनिस। तो वो उसको exactly. कहती ठीक है, लेट हिम गो इफ ही Yeah, इज लाइक दैट, क्योंकि द वे शी यूजेस हर ब्रेन, लाइक आई सेड कि शी हैज बिकम हर yeah, मदर्स डॉटर, yeah. कि जहां पे वो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला सीन था कि वो वही बात रिकॉर्ड करी जितनी जरूरत है, वो भी बड़ी Exactly. खूबसूरती से उन्होंने दिखाया। तो वहां पे Amazing. शी इज लाइक ओके फाइन, आई लेट हिम गो, लेकिन जब हमजा वापस पलटता है एंड ही इज लाइक कि मुझे वापस ले ले, मैं सीधा हो जाऊंगा, कहती है नहीं, मैं अपनी लाइफ खुद चेंज करूंगी, आई कांट बी बिच्छू लाइक यू, आई Yeah, रिमेन हैप्पीली मेंढक, यू नो। yeah. तो ही इज लाइक पहले तेरी बेटी को मारा था, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा एक सेकंड में। Exactly. एंड Marwa देन dunked Bikku ne. He still can't या change. He can't. ही कैन, एंड वो जो शेफाली शाह वाला मोमेंट था, कि वो जो उसको कहती है कि मैं शायदगी इस चीज को नहीं भुगतूंगी कि मैंने ये किया, एंड द लुक ऑन शेफाली, बिकॉज शी इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर, Yes. कि वो आपको बताती है कि ओके फाइन, दिस इज द मिजरी दैट आई हैव फेस्ड, दिस इज व्हाट आई हैव Yes. बिकम आउट ऑफ दैट थिंग, सो आई Yeah. डोंट वांट माय चाइल्ड टू बी लाइक दैट एज वेल। और जब Because वो her वापस husband's जाते हैं, photo is on the या ledge all these years, या you know? या And या Odie, this connect is there. Because, even before this climax comes, there's a lot of things. कि जो Hamza ने उसको gift दिया, between their प्यारी प्यारी बातें, like I have one here. Here we go. A teddy with a मेरे पास heart. छोटू वाला है, मेरे मेरे पास पास छोटू बड़ा वाला वाला ही है. डार्लिंग। So guys, जब when you're dating or in a relationship, cute gifts मिलते हैं, वो collect करके लोग रखते हैं, but when those gifts like turn into a sign of oppression, then you have अब्यूज, to get rid of them. And when या she was rid of this relationship, what did she do? The teddy bear, the balloons, the थ्री एवरीथिंग, flowers, the rose, the frames, everything she puts and throws, क्योंकि these things will hold me back, क्योंकि वो चीजें नजर आनी है, फिर वो बंदे की याद मूव ऑन आनी नहीं है, करता बंदा, फिर या वो experiences की याद आनी है, like the mom, आज तक वो photo नहीं वो फेंक पाई, right? या The mom is always thinking about it. So here the daughter is a step ahead. I'm getting rid of anything that reminds me of this painful period in my life. ट्रू ट्रू। और वहां पे वही ना, जब शेफाली टुवर्ड्स द एंड उसके हाथ में हाथ ले लेती है कि थैंक यू, तूने ऐसा नहीं किया, Yeah. एंड दैट इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, कि हर एक की अपनी ग्रोथ दिखाई गई है Yeah. इन दैट होल सिनेरियो, कि कौन कैसा जा रहा है। वो जो Yeah. काजिम कसाई है, वो सारी कहानी सुन रहा है, ही Yeah. सच अ ग्रेट, लाइक आई सेड, ही इज अ So ट्री, good. ही इज अ सीक्रेट होल्डर, वो Yeah. सबकी सुन लेता है, चुपचाप अपना काम करता है, आई चुपचाप. लव्ड इट, I love it. चुपचाप। वो अपने सो गाइस, हमेशा बutcher shop में होता है, आंख पर या बदरू और शमशू के ऊपर होती है कि ये शब्द क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं. Like, the scene where they're getting meat or something from him and they're talking about कि वो कहते हैं कि हर एक लड़के को like उड़ा दो like गोली से, and they're talking about कि उसका क्या करेंगे, and I'm like, they're talking in front of him. Like, is he not gonna do something or say something to someone? लेकिन obviously established हो चुका है कि he obviously is an ally. नहीं, तो शम्सो निसाब He's बोल देती always है, watching out for them. या तो शम्सो निसाब भी बोल देती है, नहीं कसाई नहीं, नॉट कासिम, कासिम Huh? कसाई नहीं, बाकियों को छोड़ Exactly. दे, या इसको नहीं, इसको And छोड़ वो दे। and वो I love how he looks at her. पूरी movie में वो देखता ही है. He doesn't really talk. I love the look he gives Shamsunisa. तो ओडी, ये हमने review में भी बात की थी when we reviewed this, कि I would love to see कि इस movie का second part, कि what स्पिन happened ऑफ, to Shamshu and Zulfi and Kasai. Like, what या happened to these three people? Because obviously he has feelings for her. ये शमशु ऐसी इतनी तेज है that obviously she has led him on all these years too, क्योंकि हमजा ने पूछा भी ये बदरू को कि oh, she's pregnant with the Kisai's baby, कसाई, या yeah, so obviously everyone knows there's something there. And then Zulfi has a thing for her. She has kissed Zulfi. I would love to see कि इन तीनों के बीच में क्या होता है, and I would love to see कि Badru has left this pinjra. She's a free bird now. What she does with her life. That would be an he's amazing back to watch. enjoying movies, he was back to enjoying movies towards Yes. the end, yeah, with a pony intact. Yes.
100%. I love, क्योंकि वो पहले फर्स्ट मूवी का जो सीन था वहीं पे एस्टैब्लिश कर देते हैं that he wants to control how she looks even, you know, कि ये पोनीटेल नहीं कर सकता और कर सकती, and then I love कि वो दिखाते हैं कि उसने पोनीटेल करनी है, you know, there's nothing that can stop her now. So yeah, I really love that. Okay, anything else you want to say? No, I just want to say one thing, कि guys, you have to watch this movie if you haven't. Stop thinking about nepotism. Stop thinking about, oh, Alia Bhatt की film है, we are boycotting it because we don't like Alia. We have to get rid of this. We have to move on. अच्छा content is what we need to see. It's not only a great content, it's what we need to view in a family viewing. चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, दोनों का देखना उतना ही जरूरी है, ना सिर्फ एंटरटेनमेंट है, इट्स अ ग्रेट मैसेज मूवी एंड ब्रिलियंस आपको नजर आती है कि हाँ, this is what happens and this is what we should not do and this is what we should do and this is what we can do. Yeah, 100%. Kyunki this is not obviously the first movie where this violence has been shown. Obviously, ek Kabir Singh, you know, ek Arjun Reddy, then there's Thappad, then there's Secret Superstar, Lajja. You know, there's so many movies out there that have addressed these issues in their own way. And some people are going to say, ki, you know, Thappad was extreme. Some are going to say Kabir Singh was right. You know, so I feel everyone is going to have a different opinion. But that's the it's point. a different storytelling at all. Movies Yeah, are supposed to make you talk and think and react. yeah. And so that's why even though हमने review किया, पर हमें लगा कि नहीं ये topic अच्छा है domestic violence का, ये movie deserves, you know, a recognition. So we wanted to come out. लेकिन Odi, let's just quickly talk about हमारे lineup में क्या आ रहा है. Okay, like I said, guys, मैं first show देखने वाली हूँ लाल सिंह चड्ढा का, and then I will give you guys my quick thoughts on it. It won't be so extensive, the review, kyunki I want to save that for a live review session with you guys and also with Harris and Odie. So when they get a chance to see that movie, when you guys get a chance to see that movie, I want to come and talk about it because I feel like this movie is going to have a lot to talk about, whether you like it, whether you don't like it, how it compares to, you know, Forrest Gump. Because I am making that a comparison because Forrest Gump. I am going to do it too. Yeah, I'm going to do it too. Yeah. I watched that movie a million times, so I know that movie scene by scene. तो मुझे देखना है कि लाल सिंह चड्ढा में क्या होता है. So that is there. Kal, guys, we are coming live to talk about Jhalak Dikhla Ja. Season 10. Yes, we are so excited because Odie and me love dancing. Dancing is our life. तो ये एक डांस कंपटीशन आ रहा है, वो भी इतने सालों बाद आ रहा है, वो भी माधुरी के साथ आ रहा है, तो हमें तो वो देखना बनता है. So we are very excited about Jhalak Dikhla Ja. So we will be coming live tomorrow to talk about the contestants, who are our favorite past winners, which people we wanted to see win, but they didn't win, you know, what are people doing now? And obviously we will talk about Tushar Kalia in there too, because he is a part of that. And then guys, obviously Friday to hamara Khatron Ke Khiladi promo hota hi hai. We talk about weekend pe kya expect karna hai, you know, because we love Khatron Ke Khiladi as well. And then Sunday, like always, we are going to be talking and reviewing the weekend episodes of Khatron. So then when Khatro ends, we are then going to talk about, we're then going to review every Sunday Jhalak Dikhla Ja. So hopefully and कीर्ति एक और चीज है ना कि कॉफी विद करण भी मिस्ड कॉफी विद करण को भी अभी देखना है. अब वी आर प्लानिंग कि उसका लाइव करना है या रिकॉर्डेड करना है, चांसेस ज्यादा रिकॉर्डिंग के. सो दैट इज व्हाई लाल सिंह चड्ढा जो है वो इस वीक के अंदर शेड्यूलिंग में थोड़ा हमें इशू आ रहा है. अगर मैनेज हो गया तो डेफिनेटली विल कम अबाउट सैटरडे, अदरवाइज मंडे प्रॉब्ली. या 100% वही है, क्योंकि हम लाइव इतना भी कर रहे हैं ना, तो हमारा ये देखो कौन आया. Hey, Dolly. Hi. Hey, darling. Please. आ गया, एंड में आ गया. I don't love you, please. तू आ गया. Sorry, I got busy, then I got caught up in traffic. So that's what it was. He's just making excuses like Hamza. Everything is everybody's fault, not his. है ना, darling? So Akbar is saying आजकल मैम ज्यादा यूट्यूबर्स बॉलीवुड मूवी को फ्लॉप ही बताते हैं. No, I don't want to do that at all. And साउथ की मूवी को ब्लॉकबस्टर बोलते हैं. So I guess that's their I guess
views, that's fine. सबके अलग views होते हैं. Like that's our thing, guys. We have no issues with differing Akbar, opinions. yeah. हमें जो लगता है वो हम बोलते हैं. आपको क्या लगता है? आप comments में लिखो, chat में लिखो. You tell us, and that's how it is. I don't care about language and all of that. If it's a good movie, it's a good movie. If it's a bad movie, it's a bad movie. I don't care. जैसे me and Harris especially were so excited for शमशेरा देखी और हमारी like हालत ही खराब होगी देख के. I was ready for it. I told you guys. हालांकि we love Ranbir Kapoor, we love Sanjay Dutt, लेकिन movie was निहायती बकवास. It was a letdown. Like you said, Shamshera. Yeah. नहीं लेकिन एक और चीज है ना अकबर शेख, as you're talking के जी साउथ की मूवी ज्यादा ब्लॉकबस्टर एंड ऑल, द थिंग इज कंटेंट की बात है. और अब सक्सेसफुल फिल्म और अ ब्लॉकबस्टर फिल्म डज नॉट मीन अ ग्रेट कंटेंट एज वेल फॉर मी. मेरे लिए अच्छी फिल्म होना जरूरी है, उसकी सक्सेस, उसका ब्लॉकबस्टर होना वो जरूरी नहीं है. ठीक है, गेस्ट अपीयरेंस. और तो मेरे लिए जरूरी है कि आपकी स्टोरी टेलिंग कैसे. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, साउथ की बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं विच आर ब्रिलियंट, लेकिन दे आर नॉट ब्लॉकबस्टर्स. हाँ, जो ब्लॉकबस्टर्स है वो भी अच्छी है, बुरी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पेशली इन टुडेज टाइम. लेकिन ये एक फैक्ट है कि बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज रिलीज हुई हैं जो बिगीज हैं, पृथ्वीराज हो, धाकड़ हो, जयेश भाई जोरदार हो, 83 हो, दे ऑल वेंट फ्लॉप एंड दैट्स अ फैक्ट. क्योंकि बहुत से फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ते हैं, चाहे Thank you, YouTube. Versati Mendak Harris. Howdy. Sorry, continue. Harris, you're better a Mendak rather than a Bichu. I love you. Even if you're Mendak. Harris बिच्छू नहीं है. ये किसी एंगल में भी Harris बिच्छू नहीं है. बिच्छू ये है. Yeah. मैं तो नागिन हूँ, मैं बिच्छू नहीं हूँ. मैं पिशाची नहीं बन जाऊंगी. ये मेंढक है. ये मेंढक है. He's a lovely Mendak. My froggy. I would take that as a compliment. I'm a Mendak too. चलो फिर मैं मेंढक की छोटी सी और वो नागिन है, तू डायन है. So you are Nagin and I'm Diane. Nagin Diane is better है. So we are the best combo still. अच्छा, anyways, तो coming back to that movie वाली बात कि फैक्ट है कि अच्छी फिल्में नहीं चली हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन चाहते हैं कि चले. और दिस बॉयकॉट कल्चर, आई एम टोटली अगेंस्ट इट. क्योंकि XYZ रीजन कोई भी है, नेपोटिज्म है, किसी ने क्या ओपिनियन रखी, किसी का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम बॉलीवुड से आप नुकसान कर रहे हैं. अच्छे कंटेंट को देखें. टिकट लगते हैं चिड़ियाघर में. यूट्यूब नेक्स्ट टाइम, यूट्यूब नेक्स्ट टाइम ना तुमने सुपर चैट भेजनी है. इस चिड़ियाघर में पैसा लगता है, फ्री का जू नहीं है. 403 people are watching us right now. Do you understand? Wow. Likes चाहिए. Likes so my lovely likes कितने हुए Harris? I can't see. Harris likes कितने हुए? Likes, 1 second. 409 people watching and 256 likes only. You guys, थोड़ा और like कर दो. अब तो Harris मैं नागिन हूँ. मैं नागिन हूँ. ये मेंढक है, वो डायन है. हमें लाइक चाहिए. Guys, Al is here. Did you miss our entire discussion, Al? Did you literally just come? Yeah. You missed her. I missed you and I got your message. Yeah, she's my niece, so that is why she looks like me. Allah, ये personal बातें यहाँ नहीं करते ओडी. क्यों नहीं? दिल की बात है. Darling is so personal. Harris, do you want to say anything since you literally just came about this movie? Yeah, we already talked about it. I just want to say I absolutely love the movie. I think it's definitely one of the best movies of this year, especially जब आलिया की acting की बात आती है. I am so jealous right now. Why did you tell me that? Me too. I'm actually planning to go France as well next month. Actually, Al, you know कि I want to go on holiday with you. So one day I will join you in Europe somewhere. Yeah. He goes everywhere. He goes everywhere. Okay, bold to bold. Yeah, so coming to Alia Bhatt, I think it was definitely, I think, the best movie of this year for me, because उसमें हर चीज थी. उसमें ड्रामा था, इंटेंसिटी थी,
हर चीज थी. There was a story in there, and I think that's what matters the most. Yeah, please like करो, subscribe करो. हथ जोड़ो, ਅਸੀਂ हथ हाथ जोड़े, जोड़ दे, हाँ, please. please like करियो. अमृत Anyways, महोत्सव मनाएं 75 सालों के लिए और लाइक करें 75 मोर. Yes. yeah, please everyone. कल रक्षाबंधन है तो हमारी बहन कीर्ति के लिए लाइक्स और सब्सक्राइब करो. What the hell is wrong Who is with हमारी you? बहन? She is not my बहन. मैं तो Please. ओडी की बहन नहीं हूँ, मैं तेरी भी Yeah. बहन नहीं हूँ, तू मेरी चुप नहीं, बैठ. I meant जो ऑडियंस में जो है उनकी बहन बन मैं सकती किसी है. की Harris, बहन you नहीं can't हूँ, decide that. Yogi. No. मैं अच्छा, किसी की बहन they नहीं हूँ. can even Kirti, क्या they can't है even ये bring आदमी? Rakis for me. हाँ, they can't even bring Rakis for me. I am not anybody's sister also. I'm not not yours. anyone's sister. Yeah, yeah. मैं किसी की sister नहीं हूँ, सिर्फ अपने real भाई की sister हूँ. That's it. Okay. Yeah. Anyways, मुझे actually movie काफी पसंद थी. I think there's a lot of things like coming to the story that I don't agree with. ओडी मुझे बोलने दे यार. मुझे हंसी आ रही बाद है. में अपना ड्रामा कर लियो. Okay. Anyways, Here we go. Yes, Kanchan, 100%. 100%. He's not You're bad my material. favorite viewer. Did you just call her material? Kanchan, did you just call her material? It's okay. It's okay. I like this comment. She's my favorite. Yeah, I love am it too. Not behen material. At all, please. So wait, Harris, who was your favorite character in the movie? So definitely Alia Bhatt for sure, and apart from that, I liked her mother, Shefali Shah. Yeah. But which character you resonated? Yeah. Which character you resonated with? With resonated definitely with Alia Bhatt, because I felt that there's obviously, you feel for her, you feel compassion and sympathy towards her. उसके लिए डर भी लगता है, उसके लिए खुशी भी होती है when she takes a stand for herself. उसके लिए लगता है कि you know she's a woman who's strong-minded as well, but कभी-कभी वो कमजोर हो जाती है, especially for her husband, for what she does, like what she goes through. Certain aspects of the movie I didn't agree with, obviously, because it was all about that misogynist, you know, impact and stuff. And I think you didn't agree. You don't agree with misogyny, or you don't agree how they showed it. Those are two different things. No, I don't agree with misogyny. That's what I'm trying to say. Exactly. Yeah. I mean, they showed it amazingly, because at the end of the day, we're from like an Asian country originally. These things happen in India, Pakistan, Bangladesh and stuff. These things happen. And I even read an interview of Alia Bhatt where she says, I समझती हूँ, sorry. Kanchan, I understand you. It was fun only. Kanchan, I love I you. also understand. I also understand. I समझती. English है ना, कोई बात नहीं चलता है. अच्छा लेकिन Harris, I thought. Harris को बोलने But कीर्ति, एक सेकंड. कीर्ति, मुझे सही सी था. मुझे लगता है Harris जो जुल्फी है. He's our जुल्फी. हाँ, ये जुल्फी है. ये हमारा जुल्फी है. लेकिन मैं his role is हमारे very good as well. I'm going to speak about गली बॉयज जैसे लगा. वो करेक्टर मुस्लिम है ना, तो वो जो डायलेक्ट है, वो है, लाइक आई सेड, वो सफीना का दूर का कजन लगती है. Empathy friends. Odie is more behen material than Kirti. Kirti is girlfriend material. Empathy friends, तुम्हें डसूंगी अभी. अगर मुझे बहन बनाना है. Empathy friends, that is amazing. ये देखो, यहाँ रिक्वेस्ट आ गई. यार हैरिस को बोलने दो. Exactly, Naveen, my bro, thank you. So, is it the same Naveen who was appreciating us? Thank you, Naveen, you're here. Yeah, I love thank you so much, buddy. Thank you so much. We really appreciate it. Thank you for listening. So yeah, I was gonna speak about Zulfi as well, but coming to Alia first. So obviously what she goes through, the journey and stuff, I think it was shown very beautifully, very realistically. So you resonate to it. Yeah. Coming to the misogyny side now, I just want to say that I think the banda obviously ek ullu ka patta hai, first of all. The way he was, like the way he was treating this banda ullu ka patta hai. Hamza. He said Harris. वो नीचे इशारा कर रहा है कि बंदा उल्लू का पट्टा है. That's why I'm smiling. अच्छा वो उल्लू का पट्टा क्यों है? At least कोई तो मेरा साथ दे रहा है. So I'm just saying कि वो उल्लू का पट्टा है, obviously, because it's like, first of all, he doesn't know how to respect a woman. ठीक है ना? Yeah. I don't want to sound very bitchy and stuff, but coming to facts, obviously this platform is about giving your heart and soul, talking about honesty and stuff. हाँ, तू लग भी रही है महक की तरह आज. हेलो, तू कमेंट्स इग्नोर करके बोल ना. तो क्या कीर्ति, जब हमारे कमेंट्स आते हैं बोलते हैं,
Harris, please continue. Go, continue. Okay. हम like आधा घंटा और लग जाएगा नहीं तो तू बोल ना. It's fine. खत्म People want us करना to stay anyway. No. Yeah. So coming to the Hamza guy, I just want to say, like, obviously his character, I think he was shown as a very weak guy mentally, because it's like he uses alcohol as a support system. He uses basically maar kutai, everything as a support system to show bahaduri and stuff. So I didn't like him as how he was. But obviously there is aspects of misogyny. These things happen around the world. Yeah. So I think the way it was scripted, it was shown, it was beautiful. Yeah. The screenplay was amazing. Yeah. Coming to my favorite scene now, I loved the scene jab Alia Bhatt basically usko bandti hai and she's like, ab main teri waad lagaungi. She comes in the red dress. With dupatta. Important is with dupatta. With dupatta, yes. Yeah. So she comes there looking all beautiful, glamorous. और फिर वो आके बोलती है चल अपना हाथ आगे कर, and then she goes tuck 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 Yeah. tuck, and she whacks it Love into it. him. I was Love like, you know what, that is what he deserves, because what she's been through and what he's given and everything, उसकी ये छोटी सी सजा है उसके लिए. It's just like a, you know, a trailer, and I think he deserved it. So I think overall for me the story was just amazing, like how the struggle was of her, how she faces this brutal married life and how she overcomes it. Yeah, you know, just like the dupatta, ek to usne use kiya to tie him up, then the mom used the dupatta to subdue him when he was to attack, and Loved then pehli baar jab usne mara usko, she hit with a frying pan, second time with the belna. So both times they're using all the feminist tools basically, है ना, कि he was like वो लड़की है, वो औरत है, तो वो domestic ही करेगी जो भी करना है इसको, and then they use domestic things to get their point across. I don't know if that was intentional or not, but it was beautiful because there's a lot of symbolism and strength there. I loved it. Yeah, no doubt. क्योंकि पता क्या बात है, I think domestic के अलावा these symbols or these artifacts, चाहे वो बेलना है, चाहे वो that frying pan था कि fielding नहीं, अब बैटिंग की बारी है, these are associated with ladies as you know feminist या femininity, which is a symbol of you know sobriety, or you can say नाजाकत है, लेकिन उसी को टूल बना के on your face वो दिखाना, मुझे लगता है वो इंटेंशनल था कि आप जिसको वीकनेस समझते हैं उसी को आपकी स्ट्रेंथ बना जाएगा कि तुम्हारा तो काम है किचन, तुम्हारा काम है घरदारी, वही चीज यूज कर रहे हैं. I loved it. And another thing just on this, जब उसको बांध के रखा हुआ है वो क्या कर रहा है, मटर छिल रहा है वो. So I loved it. Okay, so Hussein, hi. Hi Hussein. Kirti Last Singh Chadda review time. So, okay guys, once again, कल मैं first day first show Last Singh Chadda देखने जा रही हूँ, American 10 a.m. Eastern. So tomorrow at 10 o'clock Eastern, I'm gonna go watch it. वहां से मैं अपना live review दूंगी, like really quickly what I felt, what I liked, what I didn't like, how it was, and all of that. Okay, I want to do a short one because then when Harris and Odie watch it and you guys get a few days to watch it, उसके बाद शायद हम live आएंगे इसके ऊपर बात करने के लिए, because I feel like everyone has a lot to say about this movie, like, dislike, Forrest Gump comparisons, no comparisons, जो भी है Amir Khan के ऊपर, Kareena Kapoor के ऊपर. I think there's a lot, so I feel like we can do this live. Just timing की बात है. कल मैं अपना review दूंगी, which is recorded, and then Wednesday, or no, कल also we're coming live again for Jhalak Dikhla Ja. हमने Jhalak Dikhla Ja के ऊपर बात करनी है because we love dancing, we love Madhuri, so we love all of this show and the fact that it's coming. We're going to talk about that. Then Friday, obviously, हम खतरों के ऊपर बात करते हैं live, you know, the promos जो निकलते हैं उसके ऊपर हम अपनी टिप्पणी देते हैं आके, and you guys like our टिप्पणी. Then on Sunday, we come live to talk about Saturday and Sunday episodes of Khatron. So guys, once Khatron is done, we will come Sunday live and talk about Jhalak. So this is why we want to come live for Jhalak tomorrow. So yeah, Odie, क्या कहना था तुझे? वो कंचन वाला जरा वो जो था हैरिस को लेके, वो जरा प्लीज दिखाना दोबारा से. क्या कंचन का जो भी लास्ट हमने कमेंट दिखाया था, बोलने दो. हाँ, Kanchan, Harris is your darling, I know that.
So Harris, आप प्लीज क्या नाम है, इन्होंने मूवी अभी देखनी है, शी वांट्स टू टेक अ फेक ब्रेक, ठीक है, वो कहती है मैं फेक सिक लीव लूंगी, so she can watch with you because I'm sure you need again viewing, so we can always plan with Hi, Kanchan, ठीक है. Mansi. Hi Sure, why Mansi. not? देख लेंगे साथ में. Yeah, yeah. Most welcome. Oh, there you go. Empathy friend says that's mummy's weapon. They forgot to. Oh God. Acha. This Chappal and Galen hangers. thing, guys. एक बार school के लिए, you know, अब पता नहीं क्या हो रहा था. Mom was making rotiयां for dad's lunch and her lunch to take to work. And सुबह सुबह था, like we were eating breakfast, watching TV, getting ready for our bus to come. और पता नहीं, like मेरी आदत है, मैं उंगली करती हूँ, okay, मैं करती हूँ जब तक कोई, you know, reaction नहीं आता, and मैं बोली जा रही हूँ, मेरी mom बोल रही है, I'm not listening to her. I think I was in middle school or maybe high school. Middle school. I was in middle school, है ना? So then my mom, सुबह के 7, 7:30 बजे, she takes a बेलना, she comes trying to run after me. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ. I was like, what the hell are you doing with a बेलना? And I was like, Mom, seriously, you're gonna hit me with a बेलना? And she was like, no, I'm just showing for effect. मैंने कहा कोई effect नहीं हो रहा, I'm going to school. Yeah. That sounds Oh, exactly God. like what my mom would do. नहीं, I remember क्या नाम है, I was quite a Jerry in my childhood. Yeah, I was quite a Jerry in my childhood. So there was a moment जहाँ ना my mother was about to hit me with something to discipline me. I gave her the wiper, you know, that washroom wiper. इससे मार ले. And she's like, I can't do it even. Oh Mansi, I'm wow, also going in Virginia tomorrow, but I'm in Prince William County. wow. We have a Virginian in the house. To bowl. बस हो गया Here ना, we अभी go. और कितनी कहानी करनी. All right, can we get back to darlings? Chappal is national weapon for Indian moms. देसी moms, चप्पल 100%. is a must. Okay, और कुछ बोलना है फिर हम जाएं. Yeah, so Shefali Shah, I want to talk about Shefali Shah. There's quite a few things. So her character was interesting, like her funny side, of course. Her, you know, there's a scene where Zulfi comes and he's like, you know what, मुझे इससे प्यार नहीं है बदरू से, मुझे तो ये हाला पसंद है. And I was like, oh my god, ये क्या हो रहा है? Like, what? Are you serious? That was funny. Yeah. But talking about hala now, basically, obviously she was a strong-minded person. She had like जो दिल में है वो जुबान पे है, and I love that about her. She's like, तेरा पति खराब इंसान है, उसको मार दे, जहर दे दे, हर चीज कर ले. Obviously, in today's time, people might not agree with that and say it's not the right approach. No, that Khala is me. I agree to her. So now I said it. people will say that and stuff. But from my understanding, it's like at the end of the day, your daughter's going through shit. You have to support her anyhow. Obviously, there might be a certain limit and stuff. I don't personally agree with the marna and stuff, because at the end of the day, it's like nobody has the right to take somebody's life. We can't do that. But she could obviously support her daughter in any way. Ke chhod do usko, leave him and stuff. So there she was right. But I love that she was a very supportive mother, because you don't really get that and a sort bad of advisor. relationship. You know, एक माँ बहन, एक माँ बेटी की Sahib Singh दोस्ती. Oberoi, I know what you're doing. अब इसने ये comment 100 times लिखनी है, क्योंकि last जान के. time Yeah. हम एक villain returns देख के end में हमने review कर दिया उसका. Okay, but let me just tell you, मैंने first season ही नहीं देखा इसका, तो मैं अब क्या देखूं? Like matchmaking का क्या देखना है यार? मैं वैसे matchmaking साहिब तुम्हारी करा दूंगी, इस उसको देखने की जरूरत नहीं Please मुझे. बख्श दो साहिब सिंह. Yeah. Please. Please, darling. हम नहीं सह सकते. अगर उस आंटी की बात है, वो तो फिर ओडी को आके देख लो, वो तो साक्षात आंटी है. सीमा आंटी. Yeah, so coming to Shefali Shah. So obviously you do see this beautiful relationship of a mother and daughter's friendship, which I absolutely loved. And in that basis, obviously, she was like, कि मेरी बेटी भी है, मेरी दोस्त भी. I can tell her this stuff. So I think that relationship was shown on the screen beautifully and stuff. So I think was the highlight of the movie. कि उनका रिश्ता कैसा है, how she is as a character. She was a strong mother, and I liked that person. I was like, wow, I wish my mom or someone close to me had that trait where I could talk to about this sort of stuff, or she could support me and stuff. So that was totally relatable. So I love that aspect. यहाँ पे ना, like उसकी जो माँ का कैरेक्टर था ना, it wasn't stereotypical जो हम सोचते हैं कि नहीं बच्चा तुम्हारी शादी है, शादी को निभा, पति परमेश्वर है, दब जा and stuff. You know, I love कि it wasn't that stereotypical रोना धोना. It was no, take the initiative, leave
and do something about it. नहीं तो उसने तेरा end कर देना है. I love that she was, you know, doing that and not being stereotypical. So that was great. And मुझे ये भी पसंद है कि even the cop wasn't that stereotypical cop. जैसे हमने पहले बात की थी ना कि नहीं हजारों केस आते हैं कुछ नहीं होगा, you know, जो है मियाँ बीवी के रिश्ते में होता भी है. I love कि he was like no ये section है complaint डाल. And I love, you know, that's एक तो हमने वो सीन के ऊपर बात की थी that dialogue where he said कि मैं प्यार करता हूँ तभी मारता हूँ, तू प्यार करती है तभी तू सहती है or whatever. There was another dialogue where he said कि मियाँ बीवी में अनबन होती है, पतंग अटकती है सबकी. पतंग सबकी अटकती है. हाँ. So I was like, really? अनबन, yes. Every relationship, whether marriage or not, has ups and downs. But मार, no. पिटना, definitely no. Like seriously, that's not normal. So you can see his mentality कि हाँ ये तो होता ही है. It's okay. Why are you pissed off? And even that too. Scene था कि when he's trying to मनाओ her or when नहीं मानती तो फिर कहता सड़. Yeah, he did say that. Yeah, he did. So that mindset of his is definitely not the right mindset for a person to be like. Not even a husband, not even a friend, not a person should be like that. Have that mindset कि आप controlling बन जाओ, dominating बन जाओ एक relationship में. There has to be a balance. There has to be equality. So that's why I did not like Hamza's character. I think he was trash. But like, Harris, that's the beauty of it, na? No, it's the beauty of it. I'm saying Hamza played by Vijay Verma is so brilliantly done. ठीक है कि आपको नफरत होती है कि I don't like this character. That is what Vijay Verma for you. Yeah. Empathy friend says Belna close range weapon, broom hanger from a distance, chappal wireless weapon, and then you measure the speed, strength, and agony. Love. Okay, you guys, let's wrap up. Wow. Let's wrap up. Hussein, Lal Singh Chadda needs a live, guys. There's so much to talk, and please, guys, watch Forrest हमने Forrest Gump देखी और मैंने देखी ये 100 times. I'm going to watch it today. I'm going to watch it after this live. Yeah, and we will do a live. We just have to schedule when we are going to do this, but we will do it because I know a lot of people want to talk about it. And Kanchan, yes, a highlight of this live right now is Odie and Kirti trying to act interested in Harris. अकबर कहते हैं Harris, dude, Big Boss चाहते हैं कि आप हिंदी में बात करें. अच्छा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ अकबर शेख जी. हिंदी मेरी और हैरिस की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, सेकंड लैंग्वेज भी नहीं है, थर्ड या फोर्थ लैंग्वेज है. हम इंग्लिश बोर्न एंड ब्रेड हैं तो इंग्लिश आती है, यू नो. हम सोचते भी इंग्लिश में है तो जितने भी हम यहाँ हिंदी बोलते हैं वी ट्राई आवर बेस्ट टू स्पीक इन हिंदी, पर थोड़ा लीवे हमें दो, खासकर इसको, ये तो बोलता ही नहीं है. ओके, मैं तो फिर भी बोल रहा हूँ. हाँ, इन दोनों की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है और मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है. मैं पूरी हिंदू हूँ, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है. ओके, इन दोनों को अपनी पड़ी है. फिर भी थोड़ा बहुत ये है ना, इंग्लिश 19-20 का फर्क है ना. Okay, guys, so that's 19-20 नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है. That is it for us today. Please do like and share and subscribe to our channel. Please check out our other content. We already have a review. If you want a short and sweet review on Darlings, we have that already. We've also reviewed Masaba recently and Good Luck Jerry recently. Or Coffee with Karan episode 4. Recently. Hacha. So we will do that. Oh, guys, and also I don't know if you guys are interested in Game of Thrones, but the new series spinoff is starting, The House of the Dragon. I am a big Throney. I love Game of Thrones, so I will be reviewing that because आपके लिए ना सही तो मेरे अपने खुद के लिए तो करूंगी. I love it. So guys, once again, कल हमारा लाइव झलक दिखलाजा के ऊपर है. कल हमने पोस्ट भी करूंगी a live review of मेरा live sudden review of Lal Singh Chadda. फिर हम live पे आएंगे और बात करेंगे one of these days. Friday and Sunday, remember, we come live to talk about Khatron Ke Khiladi. So please join us and please like, share, and subscribe. And also, please follow us on social media. Instagram and Twitter pe I am Pari602 on Instagram and Twitter. Odie on Instagram is Odies_Insta18 and Harris is I am Harris_16. And Harris, did you have something to say? I was gonna say Delhi Crime Season 2 वो भी review करना है. Yeah, वो भी. But एक second. That's it for now, guys. Darling जरूर देखें सारे. Yeah, please watch Darling. Please हमें बताना कि देख के आपको क्या लगा. Did you agree with everything we talked about today? And if you didn't, let us know why. And that's it for us today, guys. We'll see you next time. Bye. Guys.